is Prajapita Brahma Kumari's Ishwarya Vishwavidyalaya. As the name suggests, we all believe that God is one, the Father of all souls is one, and we are all the children of the same Father. And hence we are His children, Kumar and Kumaris. So, this Godfather, He creates the universe through a physical medium. And that physical medium becomes Prajapita Brahma, who is the creator of the new world. And we, being the creation, become the children of Prajapita Brahma as well. So, with the concept of one God, one world, one family, Vasudhaiva Kutumbakam, we believe in that, and therefore we have Prajapita Brahma Kumari's Ishwarya Vishwavidyalaya, a university in true sense, which is established by none other than God Himself. So, the objective of the organization is that the organization is committed to remodeling and reshaping the society on the basis of values, human values. And the headquarters of this organization is at Mount Abu, Rajasthan, India, because India is the spiritual and has always been and will always be the spiritual guru for the world. But its service centers are situated in 137 countries of the world, which means it is a true university without any discrimination on the basis of nationality, religion, caste, creed, gender, profession, age group, whatsoever. And the organization is working at all levels for millions of people, and as I said, there is no discrimination, so people from all walks of life take equal benefit. And the offerings of the organization is majorly in the area of Raj Yoga meditation and its application in our personal lives, in our professional lives, and in making a better society. And as I said, the institution is established by none other than Supreme Godfather, who is the incorporeal being, and it is with His directions that the organization is moving ahead, and the physical medium of establishment of this organization by the incorporeal Godfather has been a simple human being like you and like us, who adopted the role of Brahma, which means the creator of the new world, and a diamond merchant of the 1920s at the age of 60 in 1936, he got directions from the Supreme, he got some divine visions which led him to adopt a spiritual lifestyle and become a medium to spread God's teaching for the whole humanity. And why is this organization called Brahma Kumaris? Some of you must have encountered this question. How many of you feel that it is a women organization and therefore it is called Brahma Kumaris? Anybody who has that perception? I'm glad that nobody has, because this organization is not just by women or not just working for the upliftment of women. It is for everybody and by everybody, but the leadership of this organization is being carried out by women, and therefore it is called Brahma Kumaris. So it is the only kind of the organization in the whole world which is spiritual in nature and also led by women. And as you can see, young women who initially were at the inception of the organization have today become the leaders of this organization. So the first administrative head is Mateshwari Jagdamba, and then we have all the dadis, the senior sisters who came at the age of 8, somebody at the age of 9, 10, 15, 16, and later on became Dadi Janki, who left her mortal coil at the age of 104. Dadi Hriday Mohini, who left her mortal coil at the age of 98. And presently, Dadi Ratan Mohini, who is still the chief of the organization at the age of 99. So this spiritual strength that we can lead a whole organization with thousands and millions of people all around the world
with values, with spirituality, is itself a model of better governance. And there are different branches through which Brahma Kumaris is functioning in the society, and we can see some of these branches which have been created to solve different purposes of service to humanity. And Raj Yoga Education and Research Foundation is one of the sister concerns, under which we have created 20 wings, and we carry out different activities which are focused on giving the benefit of meditation to people of specific profession, age group, so that everybody can take the benefit of Raj Yoga meditation. It is not only for people who want to be spiritual, but even for the people who want to be practical and successful in life. How spirituality can help you is demonstrated by these wings and through these activities of the Raj Yoga Education and Research Foundation. And we have a plethora of courses that the Brahma Kumaris offer, which range from positive thinking to inner leadership to emotional engineering to harmonious relationship, team building, conflict resolution, and many more. And we are also working with the United Nations. We are a consultative body of United Nations in the Economic and Social Council, as well as UNICEF. And in different departments of United Nations, we hold different status. We have also been a recipient of 7 Peace Messenger Awards by the United Nations, and this is some of the other status that we hold in some of the other United Nations organizations. And the services of Brahma Kumaris are presently all around the world, in different countries, in all the 5 continents, and a few glimpses of our headquarters, which is at Mount Abu. These are various retreat centers which are spread across the country, and one of the retreat centers is where we all are, Shanti Sarovar in Hyderabad in the state of Telangana. And we are celebrating this year as the year of positive change, how Raj Yoga meditation can bring a positive change in the lives of everybody, in the minds of everybody. And lastly, not to forget that this Administrators Conference is a big step in this field, and we thank all of you for making it to be a part of this program today. And as we begin with this program and as we move ahead with this program, we are going to explore different aspects of spirituality that can help us with the values and can definitely lead us towards better governance. So I sincerely thank all of you for giving me a patient hearing as I introduced the Brahma Kumaris briefly to you. And now we are moving ahead towards the conference for which we have all gathered today. Please give a big round of applause to all the speakers who would be now coming to you, in front of you, to tell you what is the real purpose of spirituality and what is the real purpose of governance, and how both of them are interlinked with each other. Thank you very much. Om Shanti. Thank you, Vidatri Ben. Thanks for all your words of wisdom. And I can see people are coming, so very nice. And let's begin with the program officially. So the Master of Ceremony today is our respected Anjali Behenji. She is Coordinator for Education-related Services in Hyderabad.
She is an international speaker. She has traveled around the country and UK, Mauritius for her. She is a very rich orator, and she is a senior faculty in Shanti Sarovar. She is a trainer. She is a media person also. You might have heard many of her lectures on YouTube. So please welcome respected Sister Anjali Behenji. She will take this program forward further. So welcome to you and welcome to Sister Anjali. Om Shanti. Again and again you are hearing this word, I suppose. Might be by now 3-4 times you have heard, because the essence of best management, good administration in the Brahma Kumaris we have experienced is practice Om Shanti. Not simply saying Om Shanti, but putting it into practice. And when Mansa Vacha Karmana, in thought, word and deed, we are peaceful, naturally what will happen? Any governance, any beautiful idea which we have and which we want to put it into practice for the betterment of the society, for the welfare of the society, will definitely 100% happen. And this is the experience for us in the Brahma Kumaris in the past 85 years from its inception in the year 1936-37. And a very, very warm welcome to all of you today. I was actually thinking that today we have this very beautiful program, seminar on values and spirituality for better governance. I think it's only 2 days back, on 14th of July, we Indians did a very, very proud moment for all of us. And what was that moment? Yes? Yes. The Chandrayaan-3 is put in the orbit, and August 23rd, I was just looking through some of the notes, and they were saying that maybe evening 5:30, around 5:30, on 23rd of August, it should land on the moon. The moon for us is Chanda Mama, always connected with the moon. And so let's hope and the hope for the best. And meantime, when we are, advancing so much technically, going so far away in the space, what about going inside ourselves? How deeply are we going inside ourselves? And actually this seminar today is to let us reflect on how our own values, our own spiritual practices can do good for the society by better governance. So once again, welcome all of you to this seminar, and thanks for participating. Can we clap for ourselves? It's so nice that you clapped the moment I asked you to, but why? What is the reason you clap for yourself? You are happy that you are in this campus today. You are happy that you took this decision to attend this seminar, is it not? The moment you stepped into the campus, I am sure you are feeling out of the world. ऐसी भी दुनिया होती है
इतनी शांति, इतना आनंद, unknown happiness, an unknown peace, everybody smiling away at one another. So, once again, welcome all of you. And we will start with a beautiful dance presentation for all of you. This is group Akshada Kuchipudi Academy and Sister Nihantri Reddy. She runs this academy and her students will do a very beautiful dance on Brahmanjali. So I welcome all the participants of the Akshada Kuchipudi Academy to present this welcome dance. Brahmanjali is the song. Tadi kunang, taga, kunang, taga,
विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सभाकल्प तरुर्भाति सभाकल्प तरुर्भाति वेद शाकोपशोभितः शास्त्रपुष्प समाकीर्ण विद्वद्भ्रमर संयुतः ब्रह्मांजलि तांडवनृत्य श्रेष्ठ दिव्यांजलि लास्य खेलनालोदकु ब्रह्मांजलि तांडवनृत्य श्रेष्ठ दिव्यांजलि लास्य खेलनालोदकु ब्रह्मांजलि भक्त्यांजलि सिद्ध योगीन्द्र सत्कविके भक्त्यांजलि सिद्ध योगीन्द्र सत्कविके नृत्यांजलि नाट्य कोविद वरुणकु नृत्यांजलि नाट्य कोविद वरुणकु ब्रह्मांजलि तांडव नृत्य श्रेष्ठ दिव्यांजलि लास्य खेलनालोलकु ब्रह्मांजलि शुभमु शुभमु साहित्य परुలకు शुभमु शुभमु संगीत विदुలకు शुभमु शुभमु नाट्यानुमोదులకు शुभमु शुभमु सर्वजनालिकी शुभमु शुभमु नाट्यानुमोదులకు शुभमु शुभमु सर्वजनालिकी ब्रह्मांजलि तांडव नृत्य श्रेष्ठ दिव्यांजलि लास्य खेलनालोलकु ब्रह्मांजलि तांडव नृत्य श्रेष्ठ दिव्यांजलि लास्य खेलनालोलकु ब्रह्मांजलि Thank you, the participants of Akshada Kuchipudi Academy. A very beautiful
presentation it was, and I couldn't hear your claps actually. Yes, you know, the students need to be motivated, na? And if they are kept motivated, then definitely they will be giving their best performances. And for this seminar of values and spirituality for better governance, I would like to invite the stage guests. We have among us respected Rajyogini Didi Poonam ji from Rajasthan. I invite Didi ji onto the stage. Also we have Rajyogi brother Harish Bhai ji from the headquarters. Brother, you are also invited on the stage. We have among us Brother I. Chandra Prakash ji, who is Regional Head, Indian Bank. Brother, you are also invited on the stage. Please join us on the dais. We have Brother Ishwar Reddy ji, Vice President Legal, Biological E Limited. Please do join us on the stage. Respected Didi ji, Harish Bhai ji, and Rajyogi brother Girish Bhai ji from Mumbai. I request all of you to join on the stage. Welcome. Welcome. Chairperson of Administrators Wing, we have respected Rajyogini Asha Didi ji. Didi ji will also be joining us on the stage. And as our guests are coming, we will also keep clapping for them. Thank you for accepting our invitation and coming for this program. Rajyogini Asha Didi ji, Chairperson Administrators Wing, is also coming on the stage. I request the sisters to welcome the guest with flowers. The Akshada Kuchipudi Academy sisters who had come for the dance gave a beautiful performance. I request that you come onto the stage and you will be given godly gifts by Didi ji. राजेश भाई स्टेज पर सुनाई नहीं दे रहा है. Didi ji, the welcome dance
was done by the students. So you please give the godly gifts to the students. They are from Akshada Kuchipudi Academy, and Sister Nihantri Reddy, she is the lead of this group. A very wonderful performance, Nihantri Reddy Garu, by your students. Rajyogini Kuldeep Didi ji, Director of Brahma Kumaris Shanti Sarovar, Director of Centers in Hyderabad. I invite her onto the stage. In the Brahma Kumaris, every program we start in the remembrance of God, because it is said that if you do something very well, then it is well begun is half done. So the best beginning of anything is invoke anything with God's remembrance. So now we will sit in God's remembrance, and then the seminar on values and spirituality for better governance. The beautiful addresses by our guests will be there, but first we will all remember the Almighty. सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले
जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना विश्व का। Om Shanti. This seminar on values and spirituality for better governance. Today we have all collected over here for this beautiful program. The director of Shanti Sarovar Academy for a Better World, we have Rajyogini Brahma Kumari Kuldeep Behenji, and she will be giving us the welcome address. Rajyogini Kuldeep Didi ji is practicing Raj Yoga meditation from her childhood, and she is taking care of the services in Telangana in few districts like Karimnagar, Nizamabad, Adilabad, Hyderabad, Rangareddy, and she is taking care of this academy also. She is also the vice chairperson of our sports wing. She has visited many places in India and abroad and has shared her experience on how practicing of spirituality and values we can always be better in our performances in whatever we are doing. And so now I invite her for the welcome address. Respected Rajyogini Brahma Kumari Kuldeep Behenji. ओम शांति। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज हमारे एडमिनिस्ट्रेटर विंग की तरफ से एक बहुत सुंदर विषय को लेकर कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस। तो हमारे विशेष इस विंग के चेयरपर्सन हमारी परम आदरणीय आशा दीदी जी हैं, जो कि दिल्ली में गुड़गांव के पास हमारा एक बहुत विशाल रिट्रीट सेंटर है, शांति सरोवर है। उससे पहले ओम शांति रिट्रीट सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में ORC कहते हैं। दीदी जी वहाँ के डायरेक्टर भी हैं और साथ साथ हमारे इस संस्था के प्रमुख वक्ता भी हैं। आप देश विदेश में जाकर बहुत सा ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और हमारी आशा दीदी के पास तो ज्ञान का बहुत विशाल भंडार है। आज हम सब के बीच में दीदी जी विशेष इस कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए हम सबके निमंत्रण पर हैदराबाद तेलंगाना में पधारे, तो हम सब करतल ध्वनि से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं। साथ साथ इस कार्य की प्रेरणा देने वाले प्रेरणा स्रोत परमपिता परमात्मा शिव बाबा का हमें सर्वप्रथम स्वागत करना है। तो शिव बाबा की प्रेरणा से, कल्याणकारी परमात्मा की प्रेरणा से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आप भगवान के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं, परम धाम तक आवाज़ जानी चाहिए। और आज की सभा में हमारे मुख्य अतिथि हैं
डॉक्टर ईश्वर रेड्डी जी, वाइस प्रेसिडेंट लीगल बायोलॉजिकल एंड लिमिटेड, और साथ में और भी मेहमान हैं। आप भी अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं, तो आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इस विंग के जो हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं भ्राता हरीश भाई का भी हम बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। और इसी विंग के बहुत सी हमारी सीनियर बहनें हैं, आदरणीय पूनम बहन जी जो जयपुर के सभी सेंटरों का संचालन करते हैं, उनके सब जोन का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी लक्ष्मी दीदी जो कि दिल्ली से आए हैं और इस विंग के विशेष मेंबर हैं, हम सब पर ज्ञान वर्षा करने के लिए ये सब देवियाँ सरस्वती के रूप में आपके सामने आई हैं, तो इनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भ्राता ईवी गिरीश भाई जी हमेशा ही हैदराबाद में आते रहते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जो भी कार्यक्रम यहाँ हम करते, हर विंग के कार्यक्रम में हमेशा आप सहयोग देते हैं। तो भ्राता गिरीश जी का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अंजलि बहन जो मंच संचालन कर रहे हैं, उनका भी हम दिल से अभिनंदन करते हैं। और विशेष आज की दुनिया में हम देखते हैं गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन प्रशासक सदा स्थायी रूप में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, IAS ऑफिसर्स आदि आदि, जिनके पास इस दुनिया को चलाने की कला है। लेकिन सबसे अच्छी प्रशासन कला कौन सिखाता है? हमें भगवान, जो कि सारी दुनिया को चलाता है। क्योंकि आप देखते हैं इस दुनिया में जो भी राजनीतिज्ञ राज्य करते हैं वो प्रशासकों की मदद से करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी किसी से भी संतुष्ट नहीं रहते। हम जैसे भोजन में टेस्ट करते, चेंज करते रहते, आज ये खाएं, आज वो खाएं, लेकिन पहले जैसा किसी का स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए भोजन में भी टेस्ट कम होता जा रहा है। तो हम सोचते अभी विदेश का है ना, वो भोजन टेस्ट करें हम, ऐसे व्यंजन बनाकर। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी चेंज करते रहते हैं। हम ये सरकार देख ली, अभी ये भी देख ली, ये भी देख ली। लेकिन आपके लिए एक शुभ समाचार है, अब बेटर गवर्नेंस के लिए परमात्मा एक नई दुनिया का निर्माण करा रहे हैं। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे, उनके हाथ में धर्म नीति भी होगी और राजनीति भी होगी। क्योंकि एक समय था हमारे भारत में राजनीति और धर्म नीति एक के हाथ में थी, दोनों पावर्स। लेकिन अभी धर्म नीति अलग हो गई, राजनीति अलग हो गई। पहले हम सब कर्म योगी कहलाते थे, अभी गृहस्थ में रहने वाले सोचते हमें तो कर्म करना है। योग करने के लिए योगी लोग जो है जंगल में या अपने आश्रमों में तपस्या करें। लेकिन परमात्मा फिर से वो कंबाइन करते कि आप कर्म योगी हो, आप गृहस्थ आश्रम वाले हो। क्योंकि अभी गृहस्थ अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया, सब जगह डिवाइड करते जा रहे। लेकिन परमात्मा ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे जहाँ गृहस्थ आश्रम होगा, हम सब कर्म योगी होंगे और हमारे हाथ में सभी सत्ताएं होंगी और सारी प्रजा हमसे संतुष्ट रहेगी। क्योंकि उसके लिए हमें स्वयं में चेंज लाना है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी सरकार की हम बात करते हैं, आधे लोग कहेंगे ये अच्छी सरकार है, आधे लोग कहेंगे नहीं बेकार, आप कौन सी सरकार की बात करते, कोई भी अच्छा नहीं। आप ये सोचिए सरकार कौन है, हम ही तो हैं। हमारे में से किसी को चुना जाता है। क्यों नहीं हम ये सोचते कि बेहतर सरकार बनाने के लिए हम सब सहयोग करें, सेल्फ में चेंज लाएं। जब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा तो आप सोचिए विश्व का परिवर्तन कैसे होगा। हम कई बार अपने स्टेज पर मंत्रियों को बुलाते हैं तो हमको बोलते बहन जी आप इतनी पवित्र संस्था में, इतने पवित्र कार्यक्रम में
हमको क्यों बुलाते हो? तो हम उनको यही कहते, आप हमारे भाई हैं, आप भी इस परिवार के एक अंग हैं। अगर हमारी एक उंगली में दर्द होता है, हम डॉक्टर को क्या कहते हैं? उंगली को ठीक कर दो या काट दो? क्या कहेंगे आप सभी? ठीक करना है या काट के फेंक देना है उसको? तो आप जब तक यहाँ नहीं आएंगे, आप कैसे ठीक होंगे? हमारे परिवार के भाई हो, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है, हमें भी बदलना है। तो हम सब क्यों किसी के ऊपर जब हम उंगली उठाते हैं, आप देखिए ये 3 उंगली किसकी तरफ है? मैं बोलती हूँ ये सब खराब लोग बैठे हैं, आपसे ज़्यादा 3 गुना मैं खराब हूँ जब मैं आपकी बुराई को देखती हूँ। इसलिए परमात्मा हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि आप स्वयं को बदल लो। जब आप बदल जाएंगे, आपको सारा संसार बदला हुआ दिखाई देगा, सब में अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देगी। तो इसलिए अपना, जैसे हम ब्लैक चश्मा पहनकर यहाँ बैठ जाएं और हम वाइट वस्त्र वाले मेजॉरिटी हैं यहाँ, हमको लगता है सभा में सब काले कपड़े पहनकर क्यों बैठे हैं। लेकिन मेरे चश्मे का परिवर्तन करना होगा। अगर हम वाइट ग्लास लगाते हैं तो हमको जिसका जो कलर है वही दिखाई देता है। इस तरह इस विद्यालय में यही शिक्षा दी जाती है। वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए हमें खुद वैल्यूज़ को धारण करना है, जो आज हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन राजयोग के प्रशिक्षण से जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, तो परमात्मा से वो शक्ति मिलती है हमें, जो परमात्मा के गुण और शक्तियों को हम राजयोग के माध्यम से अपने जीवन में धारण करते। क्योंकि जैसे आपके पास छोटा सा डिवाइस मोबाइल है, आप जहाँ भी जाते हो अपना चार्जर साथ में रखते हो मोबाइल का, और देखते हैं कहीं भी प्लग पॉइंट मिले तो हम चार्ज कर लेते हैं, ताकि हम जब भी इमरजेंसी हो हम किसी से बात कर सकते हैं। और अगर मोबाइल आपका डिस्चार्ज है और आपके पास चार्जर भी नहीं है और आपको कॉल आ रहा है किसी विशिष्ट व्यक्ति का, आपका उस समय मेंटल स्टेटस कैसा रहता है? धीरे धीरे मना इतना अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं कि अब मैं क्या करूं? ऐसे बात करना भी ठीक नहीं है, कट हो जाए तो बड़ा व्यक्ति क्या सोचेगा? फ़ोन नहीं उठाना ये भी मैनर्स नहीं है। तो जिस तरह आप अपने मोबाइल को चार्ज करके हमेशा खुश रहते हो, अगर हमारी आत्मा भी डेली मेडिटेशन से परमात्मा के साथ चार्ज हो जाए, तो आपका जीवन ही सुखी हो जाएगा और आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे आप सफल योगी रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप दीदी जी। एंड नाउ वी हैव राजयोगी हरीश भाई जी from the headquarters Mount Abu. He is the headquarter coordinator of this administrators wing. He is practicing Raj Yoga meditation from the last 45 years, and he is now in the headquarters, and from there he is coordinating lot of campaigns of this wing under this theme of values and spirituality for better governance. Brother has been involved in the campaigns in Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Kerala. So he's nearly traveled so many states, and in most of the districts we have done programs on values and spirituality for better governance with the local Brahma Kumaris centers over there. So with this vast experience, he will be sharing his thoughts on what the activities of these wings are, and will tell more about the future programs also. So I invite Rajyogi Brother Harish Bhai ji now.
ओम शांति। प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए मंच पर विराजित हमारी मोस्ट रिस्पेक्टेड आशा दीदी जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड कुलदीप दीदी जी, रिस्पेक्टेड पूनम दीदी जी, लक्ष्मी बहन और हमारी अंजलि बहन तथा आज के जो हमारे मेहमान हैं ब्रदर ईश्वर रेड्डी और ब्रदर चंद्र प्रकाश रेड्डी जी, और आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जैसे अभी दीदी बता रही थी कि आज एक बहुत खुशी का दिन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ये बहुत ही सुंदर शांति सरोवर परिसर में एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के द्वारा एक बहुत ही सुंदर विषय वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस, इस विषय पर एक कॉन्फ्रेंस कहो, सेमिनार कहो, जिसका आयोजन हुआ है और आप सभी भाई बहनें इस सेमिनार में भाग लेने के लिए पधारे हैं। आप सभी भाई बहनों का मैं भी दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहन जी बता रही थी विंग्स की एक्टिविटीज़, वैसे तो थोड़ा सा उन्होंने बता ही दिया कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग के द्वारा ऑल इंडिया में तथा नेपाल आदि स्थानों पर भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कैंपेन होता है, लेक्चर्स होते हैं। तो इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि पहला स्तर है गवर्नमेंट का जिसमें पॉलिटिशियन आते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के बाद जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का, कराने का और जनता तक वो प्रोजेक्ट को पहुंचाने का, उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करने का महत्वपूर्ण कार्य अगर किसके ऊपर है जिम्मेवारी तो वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनकी जिम्मेवारी होती है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार और प्रजा के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है और इससे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर कितना फायदा होता है। व्यक्ति कार्य करते हुए अपने आप को टेंशन फ्री रख सकती है, खुशी खुशी से अपना कार्य कर सकती है और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो ये तभी होगा जब हम लोग, ये हमारा अनुभव कहता है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के ये जो ज्ञान और योग का लाभ लेते, ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जिनको प्रैक्टिकल जीवन के अंदर बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने कई प्रकार की परिस्थिति, समस्याएं, प्रॉब्लम अचानक आ जाती है और उस समय टेंशन वाला माहौल होता है। तो उस समय अगर हम लोगों ने कुछ थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास किया होता है, आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया होता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोग जो हमारा माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ भी हम लोग ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड जो बनी है, वहाँ भी हम लोग हर साल एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पिछले महीने ही एक बहुत बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस किया
और उसमें ऑल इंडिया से 400 एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे और 9 जितने IAS ऑफिसर और IFS ऑफिसर, IRS। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई अभी तक माउंट आबू नहीं आए तो मैं तो ये पहला निमंत्रण आप सबको देना चाहूँगा कि अगर बहनों के द्वारा निमंत्रण मिले कि माउंट आबू में इस प्रकार का कार्यक्रम है, शिविर है या कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, तो आप जरूर माउंट आबू पधारें। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग ऑल इंडिया में भी अलग अलग राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार्स का प्रोग्राम करते हैं। और आज का दिन ये शुभ है कि हम हैदराबाद, तेलंगाना में यहाँ इतने सुंदर माहौल के अंदर ये सेमिनार का आयोजन किया है। और इसका विषय आप सभी देख रहे हैं, वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस। सरकार भी चाहती है कि गवर्नर्स बेटर हो। वर्तमान समय के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं बेटर गवर्नेंस, और इसके कारण वो बहुत अच्छे अच्छे उपाय करते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं। इवन हमारे लोकल जो स्टेट्स हैं, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या अन्य जो भी स्टेट है, जिनके जो भी गवर्नमेंट आती है, उनका भी एक लक्ष्य रहता है कि भाई जिस स्टेट में हम हैं उनकी हम कैसे सेवा करें, सोसाइटी की सेवा कैसे करें। और सेवा करना चाहते हैं, जैसे कई बार कहा जाता है भाई सरकार का एक प्रोजेक्ट होता है, लॉन्च होता है, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते उसका लाभ कई बार पूरा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं बीच में मिसिंग लिंक आती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में कार्य करने वाले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो अगर उनके जीवन के अंदर सेवा की भावना, सहयोग की भावना हो, इसलिए कहते हैं ना वैल्यूज़, सबसे बड़ी वैल्यूज़ अगर हम कहें जीवन में तो वो है दूसरों की सेवा का भाव। जितना हम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम लोग कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन, है ना, पुलिस सर्विस, माना हर जगह लास्ट में सर्विस आता है। IFS करो चाहे IRS, तो सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर हम पूछते हैं भाई आप कौन है, तो कहते हैं हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेवा भाव। लेकिन वर्तमान समय हम लोग देख रहे हैं कि सेवा करते हुए, सर्विस करते हुए भी कई बार थोड़ा सा स्वार्थ का भाव भी आ जाता है। तो सेवा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ आने के कारण फिर वो वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन देखने में आता है, और जितना जनता को फायदा होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस है, हम लोग जानते हैं, कहते हैं ना कि भाई वैल्यूज़ ऐसी चीज़ है कि वैल्यूज़ आर आवर रियल ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। आज व्यक्ति बाहर से कितना भी सुंदर दिखाई देता हो, लेकिन अगर उनके जीवन के अंदर वैल्यूज़ नहीं है तो वो बाहर की ब्यूटी भले अच्छी लगेगी, लेकिन रियल ब्यूटी नहीं है। जब संपर्क में आते हैं समझ में आता है कि इसके जीवन में वैल्यूज़ नहीं है, सेवा भाव नहीं है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति पसंद नहीं आती है। दूसरा कहा जाता है कि वैल्यूज़ आर द रियल ट्रेजर ऑफ आवर लाइफ। आज व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, कितना भी बड़ा महल हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन उनके जीवन में अगर वैल्यूज़ नहीं है तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो रियल हमारे जीवन की जो खजाना कहो या ब्यूटी कहो वो वैल्यूज़ है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई ये एक प्लास्टिक के फूल होते हैं और एक रियल फूल होता है। फूल तो अच्छा दिखता है, लेकिन उस फूल की वैल्यू है जिसमें खुशबू है। रंग और रूप अच्छा हो, लेकिन अगर खुशबू नहीं हो तो वो फूल की वैल्यू नहीं है। ऐसे ही ये हमारा मानव शरीर है। मानव शरीर के अंदर अगर ये चेतना शक्ति, जिसको हम सोल कहते, आत्मा कहते, ये नहीं है तो इस शरीर की वैल्यू है? हम लोग एक दिन भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी ये वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस है, और हम सभी जानते भी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई वैल्यूज़ को हम लोग नहीं जानते हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा कि तलवार की कीमत उसके बढ़िया म्यान से नहीं होती है, उसकी धार से होती है।
कपड़े की कीमत उसके चमकदार रंग से नहीं होती है, उसके तार से होती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की कीमत केवल धन, पोस्ट और पोजीशन के आधार से नहीं होती है, उसकी वैल्यूज के आधार से होती है। इसलिए हमारे भारत देश में जो भी महान आत्माओं को अभी तक हम लोग याद करते, जैसे महात्मा गांधी जी हुआ, मदर टेरेसा हुआ, ऐसे कई महान आत्मा जिसको भी हम लोग याद करते, उनके जीवन में क्या था, भले बाहरी रूप से सिंपल होंगे लेकिन उनके जीवन के अंदर वैल्यूज थी और उसके आधार से हम लोग आज तक उससे प्रेरणा लेते हैं। और वैल्यूज हम सब जानते हैं, इस सभा में बैठे हुए हर व्यक्ति को मालूम है कि हमारे जीवन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए। ये सब वैल्यूज हमारे जीवन में होना चाहिए। हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, हमें भी मालूम है कि जीवन में वैल्यूज चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम देखते हैं तो वो वैल्यूज जीवन में दिखाई नहीं देती, कम दिखाई देती है ना। सोचते तो हम बहुत अच्छा है, लेकिन जब करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं हो पाता है। इसलिए महाभारत में आपने सुना होगा, दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम नचमेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमेव निवृत्ति। धर्म क्या है वो जानता था, लेकिन उसको जीवन में धारण नहीं कर सकता था। अधर्म क्या है वो जानता था, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता था। और कभी कभी ये हालत हम लोगों की भी हो जाती है कि अच्छी चीज़ों को हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे जीवन में होगी, हमें फायदा होगा, और ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको हम छोड़ नहीं सकते। अच्छी चीज़ों को धारण नहीं कर सकते और बुरी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। और इसका कारण ही ये है कि ये जो मनोबल जिसको हम कहते हैं ना, विल पावर, वो हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। और ये विल पावर कहो, इनर पावर कहो, वो कहाँ से आएगा? तो ये इसके लिए ये सेमिनार रखा कि वैल्यूज के बाद जो दूसरा शब्द है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता में दो बातें आती है, आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन, राजयोग। और ये दो चीज अगर हम सीख लेते हैं तो उसके हमारे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है। मेडिटेशन के आधार से हम सबको बहुत अच्छा फायदा होता है। डिसीजन मेकिंग पावर जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हमारा बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हो जाते हैं और खुशी खुशी से हम जीवन जीते हैं। तो ये मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए, आगे आप सबको ये भी बताया जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, मेडिटेशन का प्रैक्टिकल अनुभव भी कराया जाएगा। और इस प्रकार से अगर हर व्यक्ति, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति है वो भी तो एक मनुष्य ही है, तो वो मनुष्य जब अपने जीवन के अंदर वैल्यूज को धारण करेगा, हर व्यक्ति चाहता है कि वैल्यू बेस्ड लाइफ हो, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हो, लेकिन उसका आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, कहाँ से ताकत आएगी, कहाँ से शक्ति आएगी, जो हमारे जीवन के अंदर हम शक्ति लेकर के हम अपने जीवन को पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं। हमारे जीवन में जब चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन का आधार जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा है, ये हमारा अनुभव कहता है कि हम लोग अगर इसका थोड़ा सा भी अभ्यास करें, भगवान ने हम सबको 24 घंटा दिया है, आधा घंटा, पौना घंटा भी अगर हम समय निकाल करके इसके लिए निकालते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हमारा जीवन ही वैल्यू बेस्ड लाइफ बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, लेकिन उस कार्य को भी आप सुचारू रूप से सफलतापूर्वक कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर के, खुश होकर के, क्योंकि जीवन का हमारा लक्ष्य केवल टेंशन में रह करके ही काम करना नहीं है, लेकिन हमें खुशी खुशी से अपनी लाइफ को जीना है।
और जब हम खुश होंगे तो हमारे परिवार वाले खुश होंगे, हमारे ऑफिस वाले खुश होंगे, सबके साथ हमारे मधुर संबंध होंगे और समाज की भी हम सेवा कर पाएंगे। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस सेमिनार में जो भी हमारे विद्वान वक्तागण मंच पर विराजित है, आप सबको इतनी अच्छी सुंदर प्रेरणादायक बातें बताएंगे और इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करने का आप लोग प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आगे के लिए भी आप सबका जीवन सफल रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश भाई जी। भाई जी ने first though he has given a very nice invitation to all of you that you can all visit Mount Abu. Nobody's clapping. Sitting here in Shanti Sarovar, if you are having this beautiful experience, if you visit the headquarters of the Brahma Kumaris, where the founder father and all the dadis and the didis, they have done tapasya over there, so that how can the human life be value based? What is spirituality in practicality? I am sure you are able to see it here also, and you will be able to see it there also, because seeing is believing. People say we should be peaceful, but how to be peaceful we don't know. People say that we shouldn't get angry, but how not to get angry we don't know. Nowadays there are some philosophies which say that no, we have to be angry. People are going to that level, and so this topic on values is so very important. But brother has touched a very important note where he says that all of us know that we have to practice these values, but the big question is how. How can we practice? How can we be peaceful? How can we be loveful? How can we be honest? How can we have that attitude of serving? So all these questions our later speakers will be addressing, that how spirituality brings all these things in our life. Thank you once again, Harish Bhaiji. And now we have Divine Brother Rajyogi E.V. Girish Bhaiji. He is an international speaker and success coach. Just a minute. I forgot your mic. E.V. Girish Bhaiji has been practicing the Raj Yoga meditation for the last 25 years, and he was at one time faculty in the Mumbai University for 11 years, and he is a well-known trainer across industries, and something very attractive places where he has trained, so I think I'll read out those places. In the ISRO, Indian Space Research Organization, the topmost in our minds as of now. So he's conducted trainings there also. Nuclear Power Corporation of India Limited, then IIT Madras, Roorkee, Patna, JNU, National Institute of Design, Indian Army, and the list goes on. But so we have a very highly motivational international speaker among us. So he will be sharing his thoughts on this topic, spirituality in practical life. I think it connects. Brother Harish talked of practicing values, but then Brother Girish Bhai is going to talk to us, and how you can practice spirituality in practical life. Brother Rajyogi Girish Bhai ji. Om Shanti. I want you to repeat this word, Om Shanti. With a little smile on your faces, say Om Shanti. With a lot of love and gratitude, say Om Shanti. With a lot of energy and enthusiasm, say Om Shanti. Fantastic.
Namaste and good morning. Can I hear a good morning? Is your morning good? Okay, only you get one Sunday off from your busy schedule, and on that day also you have been asked to attend this particular program. Still it is good? Oh wow. You know, people lie so beautifully. झूठ भी इतनी अच्छी तरह आप लोग बोल रहे हैं. Yes or no? So there is a mixed response. Honorable, respected dais, brothers and sisters in the audience, it's a great pleasure for me to be here addressing such wonderful intellectual audience on a very beautiful dimension of human existence, that is spirituality in life. How many IAS, IPS officers sitting here? Raise your hand. Okay. Even I'm not an IAS, IPS. But the moment I stepped into the Brahma Kumaris almost 25, 26 years back, I was so delighted, I was so happy when I came to know I am IAS, IPS, including IFS also. The reality of spirit, spirituality, if you put a hyphen between spirit and reality, the reality of the spirit is IAS and IPS. IAS means I am a soul. Yeah. I was not asking about Indian Administrative Services, I was speaking about I am soul. And I was super delighted when the sister told me you are an IPS also. I said, what is that? I am a peaceful soul. Wow, that was still more interesting. And today in the godly versions, when Asha Didi was reading and she was mentioning about no why, but only fly. So I am a flying soul, very light and relaxed. That's an IFS officer, right? So how many of you are IAS, IPS and IFS? Raise your hand. Oh my God. Without studying, without writing the mains, without attending the interview, all of you have become IAS, IPS officers. Can you give a big round of applause for yourself? Oh, this is interesting. खुद के बारे में पता चलता है तो खुशी तो होती ही है, yeah? Wonderful. I'm reminded of a very beautiful story. It's about how the journey of good governance or the journey of leadership starts and it culminates. In the olden times, you might have read, you might have heard, you might have seen in movies and other things, there used to be kingdom, and the king used to have a very beautiful practice. Late in the night, in the darkness, the king would slip out of his palace, disguised, bhesh badal karke, and would go amidst the people to take a real-time feedback. How is your king? Is everything okay? Is the law and order okay? He would not assign the feedback process to someone else. He would do it on his own, real-time feedback. Are you happy? Is everything okay? Are you aware of that? You might have heard it. Fine. So one fine day, this king changed his attire, disguise, slips out of his palace and in the dark so that nobody notices him, and as he was about to leave his palace, the guard, the soldier, by mistake saw the king and he stopped the king. And the first question the soldier, the guard asked the king was, who are you and where are you going? आप किसी अनजाने व्यक्ति को, स्ट्रेंजर को मिलते हो तो पूछते हो ना, who are you? कौन हो और कहाँ जा रहे हो? So the guard typically asked this question to the king, who are you? The king was taken by surprise because he thought that he would not be identified by the guard. So the moment he hears this question, who are you? The king, instead of replying in a very straightforward manner, poses another question to the guard. And the king said, how much does your king pay you for asking this question? तुम्हारा राजा तुमको ये प्रश्न पूछने के लिए कितना पैसा देता है? So the guard said, what rubbish, stop asking question and give me the reply. I am the guard, you are a stranger,
tell me who are you and where are you going, because it was his responsibility to protect the palace. So the king says, don't worry, first answer me, how much does your king pay you for asking this question? So he said, say 5,000 rupees. So what the king does is, he takes 10,000 rupees, keeps it in the hands of the guard and says, every time you meet me, please ask this question, who are you and where are you going? My dear wonderful audience, Dr. Debashish Chatterjee, who happens to be a fellowship of leadership from Fulbright Leadership Awardee, and he's a director of the Indian Institute of Management. In his book on leadership, he says the journey of leadership or the journey of life starts with this first question, who are you? And it culminates and finishes with the second question, where are you going? Kaun ho aur kahan ja rahe ho? Ye kaun ho aur kahan ja rahe ho, the direction gets distorted and deviated once I lose my focus on the value system. So who are you and where are you going? The first question is answered by spirituality, and the process and the journey of life, the righteous life, is governed by the, as Harish Bhai was mentioning, the beauty of our life, that is values, and how practically it makes a difference in creating a positive impact in the society, in the lives of others. I'll share another example. This is a very common example. You might have heard it umpteen times. I have shared it in a lot of forums. It could be a repeat for you, but I want you to still listen to this story. I mean, it's a real story. I mean, real incident. I am from Mumbai, and Mumbai is infamous for a particular date, and it is 26/11/2008. 26/11 सन 2008. Can you guess what is this date infamous for? The Taj Mahal attack. A group of terrorists amounting to 10 terrorists, they came through the sea route. Our intelligence agencies failed there. They came to Mumbai. They were completely equipped with machine guns. They had automatic rifles. They had backpacks. They had hand grenades. They were very clear. Absolutely clear. The way I am here, they were also very clear inside that they have to inflict, pain to humanity, kill as many people as possible, and in the due process, if they get killed, no questions asked. They were ready to die and kill as many people as they want. And when they came to Mumbai, they split into groups and they started firing indiscriminately and mercilessly. No, not even an iota of compassion, daya, karuna, no. They are so strongly brainwashed. I'll come to the value system. I want you to listen to it very carefully. So when these terrorists, the epitome of the attack of the Mumbai, terror attack was the iconic Taj Mahal Hotel. It's almost around 115 years old building, and there the Taj Mahal Hotel is situated. It is considered to be one of the top best hotels in the world. 10 best hotels mein uska number aata hai. Very costly, very luxurious. Only the rich, the elitist of the elite in the society, they come and take the services in that particular hotel. In that hotel, on that particular fateful night, at around 9:30, when the terrorists barged into that particular hotel, in the hotel there were 600 employees. 600 employees of the Taj Mahal Hotel. There were 600 guests who had registered and they were occupying different hotel rooms. In addition to the 600 guests, there were 500 guests who were in various halls, functions halls, attending parties, attending birthday ceremonies, marriage anniversaries, programs, lot of places. There were 500 additional guests. So in all, there were 1700 people in the hotel on that fateful night when the terrorists entered into that hotel. There is a person of Indian origin in London. His name is Dr. His name is Dr. Rohit Deshpande. And this person again is a leadership coach, and he does a lot of training on leadership. And he did a case study on the Taj Mahal attack,
And he was very surprised to find when he shares this particular case study to his students on leadership. So if I ask you a question with a little faint idea or remembrance you have about this particular incident, can you guess how many people might have got killed in the terror attack only in the Taj Mahal hotel? There were 1700 people. And the astonishing answer is, by the time the black commandos came in from Manesar and they tried to engage the terrorists, till the time it was almost around more than 24 hours has lapsed. And the terrorists had a free will to kill as many people as they wanted. So the astonishing answer is, because when I was going through this particular case study, I was really surprised to find only 34 people got killed. And in the 34, more than 17 were the hotel staff. The terrorist failed. Rohit Deshpande says it was a failed terror attack. And Rohit Deshpande very categorically also says, if the same attack would have happened in any other part of the world, the number of fatalities would have increased. It was only 34 because it happened in India. The rich spiritual background and the strong value system that we have. And look, forget about even governance. Without the army interfering, they came quite late. You could save lives. You cannot have any better example than a practical example of how values can save people. So Rohit Deshpande did this case study and he went across to understand this, and he was very surprised by one startling information which he couldn't digest it. Maybe you couldn't digest this. And what he found was that when the terrorists entered into the Taj Mahal hotel, 600 employees, out of 600 employees, not one fled that hotel. They did not run for their life, leaving the guest at the mercy of the Almighty. एक व्यक्ति नहीं भागा उस होटल में से. Rohit Deshpande went across to Chairman Emeritus Tata Group, Ratan Tata ji, and said, why did your not one single employee flee that particular place? आपका एक staff क्यों नहीं भागा वहाँ से? Ratan Tata at that time raised both of his hands and says, I don't know. I never trained them. Safety drills हमने कराया है, fire safety exercises कराया, लेकिन terror attack we never ever thought in our wildest imagination that we would be attacked by terrorists. How do you train people when you don't even envisage it? Rohit Deshpande wanted the answer why these 600 employees did not flee that particular hotel. Common human psychology, friends. If you and I am sitting here and we hear distant shots somewhere outside, bomb blast happening, people in commotion, people running helter-skelter, you and I first will run for our life. Yes or no? But then 600 employees did not flee. I'll share two experiences, friends. One, single mother. She is a single mother, husband is not there. She has got two, kids back at home. Indian mother psychology. She can kill someone for the welfare of the two children. She is not ready to sacrifice her life for the country, for the guests, because if I die, what happens to these two kids? She will be the last person to die. And she is not from the Indian army that in the name of, safety that I should sacrifice my life. Sorry, they are from the hospitality industry. And hospitality industry is, good morning, sir. Hello, ma'am. How are you, ma'am? Smile and all those, good gestures. So Rohit Deshpande couldn't figure out why. And you know what this lady did? She was a telephone operator. She latched her cabin right from 9 o'clock till the next morning 5:30. One single gunshot and she is dead. She did not worry for that. There is something which was holding her back. She called and dialed every guest in each and every room. This is what she did the entire night and said, we don't know what's happening. There is some problem. Please stay put in your room. Don't come out. Whatever heavy furniture you have inside the room, please keep it against the doors. Till we call you, don't come out. And if you have seen the real CCTV footages of the corridor of the Taj Mahal attack, the terrorist coming and trying to break open the door, trying to smash, was not able to do it. Somebody has already informed, stay put.
Second example, friends. Now the question is, what prompted her to do? It was not salary, it was not promotion, it was not any extrinsic motivators. Tatas don't pay very heavily, friends. Very average pay masters. But the sense of loyalty, dedication, not for the hotel. I mean, it's a question of life and death. There was something very strong, very profound, which prompted not one, two, you can find exceptions, but all 600, not one fled. Now that's the kind of culture Tata had. And that's the kind of culture even God wants to establish in this beautiful world. Our family, our society, our offices, our department, our clients, our customers, our vendors, anybody whom I interact with. Can it be very peaceful, very royal, with a little smile? Can you smile a little? Yeah, it seems the terrorists have come. You are under so much of stress. Second example, 24-year-old girl, a Punjabi girl. She has not even lived life, just handpicked from campus selection from the institute, directly working in the Taj Mahal Hotel. She is a banquet manager of one banquet wherein Hindustan Unilevers Limited International Global Board of Directors meeting is taking place. 69 people. Few directors outgoing, few incoming directors, 69 directors. Rohit Deshpande asked this girl, why you did not flee? Tum kyun nahi bhagi? Now the answer is very profound, friends. Can I create our next generation on this basis? This 24-year-old girl replied in Hindi, कैसे छोड़ देती 69 लोगों को मरने के लिए? How could I have left 69 people to die? There was something inside which was prompting her not to flee but to help these 69 people. And you know, these 600 employees didn't have a kitchen knife and the terrorist had machine guns. What is fighting against whom and who won ultimately? It's not negativity, it's not terrorism, it's not pain. It's love, it's humanity, which is any time more powerful. And as Harish Bhai was saying, I know, but I don't believe in it. I don't practice it. There is something which is, missing. Spirituality and meditation helps me to regain my willpower, to lead a life come what may, based on values, based on spirituality. And you know what this girl did? Then the black commandos came and they started engaging the terrorists, and the terrorists lit the entire building on fire. It was completely smoky. So they were not able to, breathe properly. So the chefs created a human chain. And by the time the fire brigade people had come from outside, they kept ladders, they broke open all the window panes in each and every room. They evacuated people from the windows. And you know what this girl did? She would hold the hand of every member of the 69 directors, would run through the corridor, leave that person on that window, and again come back to fetch another person. I don't know, if I would have been in her place, I would flee first. आप होते तो शायद आप सोचते थे पहले अपनी जान बचाओ. But she came back again. So there was a South Indian lady, she was the Southeast Asia Pacific HR head of HUL. She's in her experience, first time in my life wearing a sari, 6th floor, fire brigade ladder, I had to come down, it was so inconvenient. Now the question is, what prompted these 600 people not to flee in the face of death? And Rohit Deshpande did a lot of extensive study, and he came to know the unique hiring process of Hindustan Unilever Limited. They went across to cities not Hyderabad or Mumbai or Chennai or Bangalore or Delhi. They did not go to Tier A metropolitan cities. They went to smaller cities, Tier C cities like Haldia in West Bengal, Tiruchirappalli in Tamil Nadu, Nasik in Maharashtra, Ludhiana in Punjab. Simple cities. They went across to simple colleges and they asked the teachers, please give me a list of students who have very great value, who always respect elders, who will touch the papa's feet early morning when they come out of their house. It was inbuilt in those value system. And in the face of adversity and challenges, that innate quality came out. Friends, can we practice one innate quality today? At least one gift we should take from this seminar? Yeah?
It will seem little hilarious, but I want you to practice it. Will you do that? It really helped me in my practical life. My mother was diagnosed with cancer when I took her to Tata Memorial, and it's real, almost around 18 years back when we took her to Tata Memorial Cancer Research Hospital. The doctors in Chennai had already operated, and it was bad. Because of the operation, it spread to the entire body. The doctors told me, 3 months, your mother cannot survive more than 3 months. It has spread to the entire body. I said, fine. I told the doctor, doctor, will you do your best? He said, fine. He asked me a question. He said, Girish, will you do your best? I said, sir, I am the son. मैं तो ईट पत्थर एक कर दूंगा. I'll turn every table. I तो made the dialogue, had no idea what to do. The next day, God's godly versions, and I was waiting and wanting to know what should I do to make my mama happy. I can't take her pain, I can't treat her. She was writhing in pain. God's version, that's where spirituality comes into picture. God version said, always be happy and smiling. My tube light clicked, and myself and my brother, we always smiled, we laughed, we celebrated life every moment. And the result, my mother survived for 3 long years. The doctors said, your mother has started responding to the medicine. Initially they said 5 sittings of chemotherapy, 1 she will be able to tolerate, the rest she will not be. She completed 5 chemotherapy, 55 hittings of radiation, 3 years. And her passing off also was very, peaceful. You know what I did with my mother? I want you all to do. Keep your fingers like this. I share it with the rest of the whole world. Keep it at the end of your lips. Push it up. Smile. I want to see your beautiful, teeth also. Smile. Yeah. Put your hands down, but keep smiling. Yeah. Look at the person sitting next to you with a smile, beautiful smile. Please look at each other. Yeah, at least you can share some goodness, good governance, good smile. Yeah. Okay. In case you find the person sitting next to you is not smiling, please cooperate with your 2 fingers and make the other person laugh. Abhi ye halat aa gaya. Bhai inki muskurahat bhi hamare haath mein. Yeah. I have a small request. You are a very wonderful intellectual audience. Can I share? Can I request? Till tomorrow 1 p.m. be like this. हो सकता है? Yeah. Possible? Pakka? Tomorrow evening 5:30 p.m. you are about to leave your office. Suddenly your boss gives you a message, emergency meeting. Instead of criticizing your boss, friends, there is a very beautiful saying. If you are not at peace, it's not that someone else has taken your peace, it's that you have given away your peace. You cannot control what others do to you, you can only control what happens in you. And what happens in you is my smile, and this is what I can be in control of. So I have a request, please smile. Please smile. Yeah. So all the mothers, when you go home and you see your child not studying, हाँ bye bye बेटा, ठीक है ना? He says, uncle बहुत हो गया है, please छुट्टी दे दो हमको, ठीक है? So the child is watching television, not studying. Mummies, all mothers, with a smile you say, beta, please stop watching television and please study. He will look at you like this and say, Mama, it appears as if you are a COVID patient. Your symptoms are so khatarnak. You are not getting agitated. You are smiling. Can I be in complete control of my happiness and my smile? That's what spirituality is all about. And look how beautiful it will make your life, practically, your relationship. Thank you so much. I really enjoyed interacting with you. God bless you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Divine Brother Girish Bhaiji. His speech was so fascinating. You said you will keep smiling, but remember tomorrow is Monday. Even if it is Monday, it's not Friday. So that you can keep smiling that there's going to be a Saturday and Sunday. But I am sure with this practice of spirituality, by listening to such sessions and being connected, you can always keep smiling, ever smiling.
So thank you once again, Girish Bhaiji. Yes. And we will have our guest of today's program, Divine Brother I. Chandrasekhar Prakash Ji, Regional Head, Indian Bank. He's actually had to leave some time back, but then he stayed back, and I would like him to share a few words of wisdom and his thoughts on this aspect of values and spirituality for better governance. And brother has also deputed few of the employees of the bank for this program, understanding the importance of this program. Divine Brother Chandra Prakash Garu. A warm good morning to speakers in this dais and people in the auditorium. It is a different stage for a banker. Okay, because normally we used to have talk about inflation, demand, supply, so many things. But now I have to speak something about the spirituality and other things. Good. After a quite long, maybe after a gap of 15 years, I am attending this Brahma Kumari's program. Once in Chennai I attended, after that I didn't have the opportunity. Now I really thank you to the organizers for giving me a wonderful opportunity to meet you all. Actually, while Sir has given a wonderful meaning to IAS, IPS, IFS, the first time I am listening. Sir, can you find a meaning for a banker like this? It will be useful to many. See, at the beginning of this program, they asked us to speak with the three or more peoples, with the 3 questions. The first one is, which is the animal they likes? Any psychological fact is behind that to ask that particular things? They cannot tell, but I believe that there will be some psychological fact is there. See, even we can see a lot of psychological books, or you can see in the YouTube, it will come, you tell which animal or which number you like, I will tell about your, who you are. Exactly. When I had talked with Mr. Hariji, he told a cow. Yes. Almost 80% of the people here will like cow, will have cow. Because I am seeing him, he is having that cool temperament. Not only he is staying at Abu, but still, he is having his inner peace. So cow is such a thing, that's why it just comes to this one. So likewise, everybody will have their own choice of animals. It reveals who you are. The second one is which one you like, whether summer, winter, or which is the things you like. It also had it. The third one is, who is your role model? I don't know how many of people has taken cinema stars, cricket stars, blah blah, as your role model. But I strongly believe nobody is superior. Nobody is better, nobody is best as a role model than your parents. I believe your children also will see that you are the role models for them. I think many of you will accept it. Maybe opinions will be, we will have a lot of difference of opinions. People will differ, but as far as myself concerned, I have that. My parents are my role models. See, whatever you are speaking now, these values and spirituality, all these things. See what? Here, the first one is the soul, which enters into your body. See, everybody is having names.
The name is only for the body. Okay, the soul enters into your body and it allows you, it permits you to experiment this life, to enjoy everything. Once the soul goes out, nameless, it's a body. So that is there. See, the soul, what is inside of you, it has to be honored. It has to manage. How to manage? This is the answer they have to say. They are finding it out. See, the meditation, when Madam also has, when in her address she told that when to start the meditation. See, what for meditation? Just to keep you calm. You see, you have to get the power, to face the challenges. So meditation will help you to face challenges, to enjoy the life, enjoy the atmosphere, enjoy the air, whatever is there. Okay. So meditation means what? Sitting in a calm place, just chanting something. So how many of you has experienced that village life? Morning when you are going around over 5 o'clock, if you go in there, just you go for a walk in that villages and things, you see the breeze, what a cool breeze you will have. You will listen the sounds of that birds. That gives you that peaceful, na? By instead of sitting in a place and chanting something, if you just go for a walk around, what are the various noises you are hearing? Just listen it. Many of them will have the habit of listening musics. See, simple example. Before start of the program, there was a dance program has been conducted here with a wonderful divine music. In that 10 minutes, we have forgotten all our worries, everything we have forgotten, just it's made us to be cool. And this is one of the meditation. See, we can find many ways is there, how to keep ourselves cool and composed, how to make ourselves to get strong and things. So whichever you find, whichever is giving you the inner peace, that's it. That is that meditation. See, while speaking, they have told that India is the only country which has values for the humans. No other country is having it. Okay. And now if you see the background also, this one, it has a very light colors. Very light colors. Because these colors will give peace to you. And everybody when started these things, they started with Om Shanti. And sometimes we will have Om Namo Narayana, Om Namah Shivaya, so many things. According to our choice, we will have that one. But everything will have that very word, Om. That is a mantra. If you see so many books, Vedas, whatever it may be, those days, whatever we have the books, it is there that when this universe was created, the first word has come is Om. If you pronounce the word Om with what has been defined in that particular Vedas and this one, if you pronounce that from your bottom of your body, comes to that your head, you will find, you can speak to your soul. You can find out what is your soul. That's the power this Om is having, which belongs to this soil. No other country is having that. Here, I think their journey of this Brahma Kumaris has started from 1936.
Really, it's a wonderful journey. Still, they are going strong, taking, keeping, nurturing the values of this country. It is really a great one, and I wish this journey has to continue in still thousands of years, because this is the value, this is that thing which keep this country intact, unity in diversity. I once again thank you the organizers for giving me an opportunity. Thank you one and all. Thank you. Thank you, Brother Chandra Prakash Garu. Very thoughtful things he has put before us, and since he has to leave for another meeting, respected Asha Didi ji will present godly gifts to Brother. And before we proceed for the next speaker, we will have the lighting of lamp for this seminar on values and spirituality for better governance. So for those few minutes, I request Brother Chandra Prakash ji to be present in this ceremony of lighting the lamp. And there has been a very good response from few organizations in sending their employees to this program. I request Sister Shakti to give us the names of the organizations, and one from the organization will be coming over here for the lighting of lamp. Sister Shakti Ben, she is coordinating the administrative service wing services here in Hyderabad. ओम शांति। आज की इस समय पर विशेष रूप में सिटी के चारों तरफ से पहुंचे हुए भाई बहनों में विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से भी पहुंचे हैं, तो मैं निवेदन करती हूं जी सीतारामुलु गारू, चीफ इंजीनियर पीओ पंचायती राज यहाँ से आएंगे, जो भी डिपार्टमेंट के हम निमंत्रण देंगे। जी सीतारामुलु गारू, पंचायती राज चीफ इंजीनियर, डॉक्टर पीवीवी प्रसाद राव गारू, फार्मर डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ఆఫ్ ఆయుష్, వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। రాజేష్ కుమార్ గారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్, అండ్ टी విశ్వేశ్వరరావు గారు, ఏడీఈ टीएस జెన్కోట్ से, ఎస్ బద్రీనాథరావు గారు, డిప్యూటీ కలెక్టర్ రిటైర్డ్, వారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। ఏసీఎస్ రెడ్డి గారు, ఎల్బీ నగర్ అడ్వకేట్, आराम से बैठे మంచి చప్పట్లతో ఈరోజు సంతోషమైన రోజు। జి దుర్గారావు గారు, న్యూస్ రీడర్, ఆల్ ఇండియా రేడియో, కే జీవిత గారు, ఏడీఈ టీఎస్ జెన్కో, రమేష్ గారు, ఆర్టీసీ హెచ్ఓడి మియాపూర్, ఆర్టీసీ సోదరులు చాలామంది విభిన్న జిల్లాల నుండి కూడా వచ్చారు, వాళ్ళ కొరకు గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు, నిన్న నుండే వాళ్ళు చాలా దూరం నుండి వచ్చారు। ఎస్ పద్మజ గారు, సిజిఎం వాటర్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్, సిహెచ్ రజనీజీ గారు, డీజీఎం వాటర్ వర్క్, బ్రదర్ చంద్రమణి గారు, డిప్యూటీ జీఎం ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, డాక్టర్ ఎంఆర్ చౌదరి వాదపట్ల గారు, చైర్మన్ ఎంసీఆర్ ग्रुप ऑफ कंपनीज, टी नागप्रिया जी गारू, डीजीएम वाटर वर्क। मंच पर आसीन हमारे आज के विशेष मेहमान और परम आदरणीय आशा दीदी जी दीप प्रज्वलन के लिए बीच में पहुंचेंगे, और वर्ग से आए हुए बहनों को भी मैं निमंत्रण देती हूं। और इसमें एनटीपीसी रामवीर सिंह गारू, ఏజీఎం, వారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। ఎన్టీపీసీ
और विंग के प्रोग्राम में आए हुए विभिन्न स्टेट से पहुँचे हुए बहनें, अनीता बेन जी दिल्ली, रूपाली बेन जी राजस्थान, हेतल बेन जी राजस्थान, विधात्री बेन ओआरसी, शीला बेन जी हैदराबाद, माधवी बहन शांति सरोवर, वंशीबाई शांति सरोवर, सुनीता बेन जी इंदौर, और कर्नाटक की तरफ से भी एक बहन आएंगे, महाराष्ट्र से भी एक बहन आएंगे। रामवीर सिंह गारू, दीप प्रज्वलन के बाद 1 मिनट सभी स्टेज पे रहेंगे, एक ग्रुप फोटो रहेगा। घर घर में यहाँ शांति होगी, मिटेगा अंधियारा, संस्कृति की जो चले जग में होगा उजियारा, जग में होगा उजियारा, जग में होगा उजियारा। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, जगमग दिया जले, संस्कृति की। ఈ ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో మీ అందరు కూడా మీ యొక్క చేతులు ఎత్తుతూ ఈ దీప ప్రజ్వలనలో పాల్గొనాలి। सभी अपने हाथ हिलाते हुए अपने जीवन में सदा प्रकाश बनाए रखेंगे। దీపం వెలిగినప్పుడు అంధకారం దూరమైనట్టుగా మనలో ఉన్నటువంటి చెడు, బలహీనతలు, దుఃఖము, అశాంతి అంత దూరమవుతూ ఆధ్యాత్మికత యొక్క క్రాంతిని మనం ఈరోజు యొక్క గ్లోబల్ పీస్ ఆడిటోరియంలో నింపుకొని ఒక కొత్త జీవితాన్ని, నూతన జీవితాన్ని ఈ పండుగ సందర్భంగా కూడా నింపుకొని ముందుకు వెళ్దాము। థ్యాంక్ యూ। Om Shanti. Our next speaker is Rajyogini Brahma Kumari Poonam Didi ji. She is from Jaipur and sub-zone in charge over there, and she has been practicing meditation from her childhood. Her parents also were in this spiritual knowledge, and like our Chandra Prakash ji said, she has taken forward the practice of spirituality so much that she is taking care of so many centers in Jaipur and around, and seeing to it that the values and spirituality reach out to everybody. And being in the administrator's wing, the whole of Rajasthan state has been covered by her, reaching out to most of the offices, government, private, and she has conducted, or under her leadership, seminars have been conducted on this values and spirituality for better governance. तो मैं अभी निमंत्रण देती हूँ आदरणीय राजयोगिनी पूनम दीदी जी, सब जोन इंचार्ज जयपुर, आप चंद शब्द इस अवसर पर कहें। ओम शांति। सम्माननीय मंच, आज हम सब सेमिनार में एकत्रित हैं वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर विषय लिया है जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। हम सब प्रशासनिक विभाग से कभी ना कभी कांटेक्ट में आते हैं और हमारे खट्टे
खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं। हमें सहयोग मिलता भी है क्योंकि वो बैठे ही हैं सेवा के लिए, जनता के लिए, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशंस हैं जिसके अंतर्गत उन्हें कार्य करना है। तो पहले तो वो स्वयं पर शासन करने की कला सीखें, सेल्फ डिसिप्लिन हों, उनका सेल्फ कंट्रोल अच्छा हो, तभी वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएंगे। तो एक प्रकार से कहें, पहले राजा होते थे, हमने राजा के कर्तव्य सुने। अब ये वर्तमान युग के राजा हैं, अपने अपने वर्क प्लेस पर अपनी अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। मैं प्राचीन हमारे ग्रंथ रामायण से कुछ कोट करना चाहती हूँ। राजा राम बनने वाले थे। नेक्स्ट डे उनको ऑर्डर मिला वनवास जाओ। राज्य तिलक के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे और जब उन्हें ये आज्ञा मिले तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ये उनकी कौन सी वैल्यू थी? ये उनकी वैल्यू थी न्यूट्रल, तटस्थ, डिटैच्ड और हर स्थिति में समभाव, सुख दुख में, खुशी गम में समभाव। माता ने पूछा, बेटा तुम वनवास जाओगे तो कैसा है ये तुम्हें लग रहा है? कहता है मैं यहाँ अयोध्या का राजा बनता, अब मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। विशाल जंगल है। ये क्या है? पॉजिटिव अप्रोच। तो राजा जिसमें जो सेवक है जनता का, उसकी महत्वपूर्ण क्वालिटी राग और द्वेष से ऊपर होना चाहिए। राग कहते हैं अटैचमेंट और द्वेष कहते हैं नफरत, जेलेसी, हेट्रेड। अगर वो राग और द्वेष से, अटैचमेंट एंड हेट्रेड से अबव है तो उसकी डिसीजन पावर अच्छा कार्य करेगी। तराजू का कांटा स्थिर है तो ठीक निर्णय देता है। एक तरफ अटैचमेंट ज़्यादा हो तो पलड़ा झुक जाएगा, दूसरी तरफ हेट्रेड है, जेलसी है तो पलड़ा। तो बैलेंस माइंड का, डिटैच्ड आउटलुक और साथ साथ जब ये क्वालिटीज़ आती हैं, वो राजा एक सफल राजा बनता है। और विल पावर भी बिल्डअप होती है, कंसंट्रेशन पावर भी आती है। अब ये क्वालिटी कैसे आए? राग और द्वेष ह्यूमन वीकनेसेस हैं। कभी हम अटैचमेंट में आ जाते हैं, अति कहीं लोभ आ जाता है, इंद्रियों के आकर्षण, सेंसरी प्लेजर्स, कहीं मन अनुकूल काम नहीं होता, हमारे साथी कोऑपरेट नहीं करते तो हम थोड़ा सा उनसे डिटैच होते हैं, नाराज हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट बिहेवियर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी हमारे को हेल्प करती है कि मैं आत्मा हूँ, मालिक सेंसरी ऑर्गन्स की और आत्मा की मन बुद्धि के राजा। और ये मेरा रोल है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, बिजनेस में हूँ,
कंपनी में हूँ, जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिली, ये मेरा रोल है। तो रोल डिटैच होके किया जाता है और रोल में ब्यूटी भी तभी आती है। इसलिए राजा किंग सर्वर है, सेवक है, और सेवक राग द्वेष से रहित है। दूसरी क्वालिटी जो मैंने रामायण से ली, शबरी की। शबरी बरसों तक राजा राम का इंतजार करती रही। प्रशासन, राजा शबरी के पास पहुंचा और वहां उन्होंने शबरी के झूठे बेर प्यार से लिए। एक्सीलेंस, शबरी ने झूठे बेर खिलाए। क्यों? कहीं राम जी को कड़वे बेर ना मिल जाए, कीड़े वाले ना मिल जाए, तो चक चक के बेर उन्होंने खिलाए। उसमें प्रेम भाव था। माताएं भी बच्चों को दूध देती हैं तो हाथ पे देखती हैं कि बहुत गर्म तो नहीं है, बच्चे का मुंह नहीं जल जाए। तो ये है एक्सेलेंस की क्वालिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटर को गांव तक जाना चाहिए, कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए और अपना बेस्ट देना है, एक्सेलेंट वर्क हो। तीसरी विशेषता, राम जी सबको साथ लेके चले। दलितों, साधारणों, बानरों, असहाय हों, सबको उन्होंने सम्मान दिया और सबका साथ लिया रावण पर विजय पाने के लिए। तो हमें भी सबका साथ लेना है, सहयोग लेना है, पर एक कोच चाहिए और वो कोच गुड एडमिनिस्ट्रेटर रामायण में है जामवंती। जामवंती जैसा एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाए ना तो सेना का उमंग उत्साह भरपूर हो जाता है, वो मोटिवेटेड रहते हैं। हनुमान जी में उन्होंने उमंग उत्साह भरा। वो अपनी शक्ति भूल गए थे। उनको कहा तुम पवन पुत्र हो, हनुमान हो, असंभव को संभव कर सकते हो, तुम महावीर हो। तो उनकी सोई शक्ति जागृत हुई ना। तो इस प्रकार सबका साथ कब मिलता है? जब एडमिनिस्ट्रेटर भी मोटिवेटेड है और अपने साथियों का भी मोटिवेशन टाइम टू टाइम इंक्रीज करता है। और वीकनेस, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटर को केयरफुल रहना होगा। सुपन खान ने लक्ष्मण को फंसाने की कोशिश की, नाक कान काट दिया। उसने जाके रावण को गलत बोला, उसके कान भरे, ऐसा ऐसा हुआ। और साथ साथ मिसगाइड भी किया। एक सुंदर नारी है, वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, कहाँ वो वनवासियों के पास है। तो रावण को उसने एक्साइट भी किया और कान भी भरे। तो कान का कच्चा अगर एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो लोगों के सही ओपिनियन उसे नहीं प्राप्त है, डिसीजन में गलती हो जाती है। तो खुद समझे, देखे, सुने, फिर निर्णय ले, क्लैरिटी हो। रावण की हार का कारण क्या? इंद्रियों की गुलामी। और राम की जीत उसके सत्य, न्याय, सिद्धांत और निष्पक्षता के 4 पहिए। रावण जब उसका शव युद्ध भूमि में था, राम जी गए मंदोदरी से मिलने। तो मंदोदरी की पीठ थी, उन्होंने पीठ से ही पहचान लिया ये माता है।
तो प्रणाम माता कह के उन्होंने मंदोदरी का सम्मान किया। तो मंदोदरी ने कहा रावण की हार इसीलिए हुई, उन्होंने माता सीता पर गलत दृष्टि रखी, और राम हैं जिन्होंने मेरी परछाई से ही पहचान लिया कि मैं माता हूँ, स्त्री नहीं हूँ, नारी नहीं हूँ, माता हूँ। तो प्रमुख बात है इंद्रिय जीत, सेंसरी ऑर्गन्स पे हमारा कंट्रोल। हम सोल कॉन्शियस हों तभी हम प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे। और साथ साथ अनेक क्वालिफिकेशंस है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाती, समय की सीमा है। तो आप सब एक गुड रूलर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर हैं, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और आपका स्थान राजा के बाद है। तो अपने अंदर ये सम्मान जागृत करिए, नशा रखिए, और हम लेने वाले लेवता नहीं हैं, हम दाता हैं, सेवक हैं। और अब जब हम कुर्सी से उठें तो हम देखें हमने कितनों की दुआएं ली, कितनों को हमने कोऑपरेट किया, कितनों को मदद की, ना कि ये मेरा कितना बैलेंस इनकम का बना कि मैंने रिश्वत से लिया, गलत तरीके से लिया या क्या किया। तो यहाँ आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारक। ऐसे सुंदर कार्यक्रम में आप आए और यहाँ से आप बहुत अच्छी बातें सीख के भी जाएंगे और अपने अंदर वो क्वालिटीज़ इम्प्रूव करेंगे, ये मेरी आशा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम दीदी जी को। In a very nice way, Didi ji has explained with the examples of from Ramayana how we have to practice good governance with values and spirituality. Thanks once again, Poonam Didi ji. Yes, and now we have Brother Ishwar Reddy ji. He is the Vice President Legal of Biological E Limited. Biological E Limited is very, very close to the Shanti Sarovar, and you are welcome. And he'll give his greetings on this occasion. Then after this, we will have our respected Asha Didi ji, who will be giving the keynote speech of today's seminar. Now we have Brother Ishwar Reddy ji. Distinguished guests on the dais and distinguished guests in the audience, I thank Brahmakumari's organization for organizing this very relevant session, which will be highly useful to the administrators and managers. Of course, it is relevant to all of us in everyday life. Without values and spirituality, any activity of life, it has no meaning at all. So therefore, it is a highly relevant topic. Now, what is this values and what is this spirituality? From where does it come? And why should we practice in governance? And can't we do it without that? At the outset, I say we cannot do it without values and spirituality, honestly. Whatever we study, say economics, law, MBBS, or MD, or some other subject, any subject, it is only helpful only to the extent of only taking decision relevant to that subject. But how we take that decision, why we should take that decision, to whom it is going to be helpful, there
unless values and spirituality intervenes, our decisions cannot be a full-fledged decision. I am working in the same job for the past 33 years. I am holding the same chair, same table, same room. I don't have any transfers for the past 33 years. And I am the over-promoted person, I am the overpaid person. Promotions and pay always come running behind us. And here the secret is decision making in the job is not easy. Decision making is always painful. When the decision making comes, there your knowledge in the subject and also again your values and spiritual strength, it should come to your rescue. Otherwise, every decision is having the potency of bringing lot of stress. So therefore, why we fail in the job? Why some people do not fail in the job? Because we don't take decisions in the manner that it requires for the benefit of the God. When we take a decision for the benefit of God, how do we fail in the job? When we take a decision for the benefit of the society, how do we fail? We take so many decisions in the job. And there, if we take a decision for our selfishness, for our limited purpose, then the problem will lead to a problem. Then the decision will lead to a problem. So therefore, here, there is a lot of importance to the values and spirituality in our day-to-day life, more particularly probably administrators and managers. I personally feel every day, Prime Minister down to every person in India, every Chief Minister, every Cabinet Minister, every IAS officer, every IPS, every IFS officer, every MD, every director should compulsorily read these values and spirituality. When we read, when we go to job, when we do any job or activity, human activity, we will completely help the society, we will completely help the God, and we will not do any mistakes. Then, where do we find these values? Where do we find the spirituality? Probably this is the secret many people do not tell us. We talk about values, we talk about spirituality, we talk about relevance without disclosing where do we find. I tell you, ఇండియాలో పుట్టడం చాలా అదృష్టం మనం. ఇండియాలో కానీ పుట్టకపోతే మనకి ఈ జ్ఞానం అంటే ఏంటి, అజ్ఞానం అంటే ఏంటి, విద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అంటే ఏంటి, చీకటి అంటే ఏంటి, వెలుగంటే ఏంటి, ఈ డిఫరెన్సెస్ మిగిలిన జ్ఞానాల్లో లేదు. ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా మనకు మన భారతదేశంలోనే ఉన్నది. ఈ జ్ఞానం అంతా, ఈ స్పిరిచువాలిటీ వాల్యూస్ ఎక్కడున్నది? మన ఉపనిషత్తులో ఉన్నది, మన భగవద్గీతలో ఉన్నది, మన రామాయణంలో ఉన్నది, మన భాగవతంలో ఉన్నది, మన భారతంలో ఉన్నది. ఇది మనం కంపల్సరీ చదవాలి. ఇది చదవకుండా మనం చేద్దామంటే, జాబ్ చేద్దామంటే కుదరదు. ఇది చదవకుండా నేను స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేద్దామంటే కుదరదు. ఇది చదవకుండా భారతదేశాన్ని రూల్ చేద్దామంటే కుదరదు. అది ఎక్కడికో వెళ్తుంది, అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ వచ్చేసింది, అది డిజాస్టర్స్ ఎన్నో జరిగిపోతున్నాయి, అది ఎక్కడో ఫ్లడ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఎన్నో విపరీతమైన టెంపరేచర్ వచ్చేస్తున్నది, విపరీతమైన ఫ్లడ్స్, డిజాస్టర్స్ ఎవ్రీడే. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాజ్ వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ వీ డిసైడ్ ఫర్ అవర్ sake, for our benefit. We are worried about, we do not think about the consequences of our decisions, and we not think about the consequences of our job to the society, to the ultimate benefit of the society. So therefore, understand the roots of the knowledge. Please go through the real knowledge what we have inherited from our ancestors. It is there, it is available with us, it is available to our next door. Please spend every day some time in acquiring that knowledge, and we are bound to develop into a beautiful country, well-developed country, India. And we are going to stand out as a distinguished nation in the world. So therefore, I wish the Brahma Kumari organization for conducting this session, which is going to be very relevant for all of us. I hope all of you would be benefited adequately by this session. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ ఈశ్వర్ రెడ్డి గారు. చాలా చక్కగా మీరు చెప్పడం జరిగింది. బ్రహ్మకుమారీస్లో ఏదైతే బ్రదర్ గారు అన్నారో,
మన శాస్త్రాలు వేదాలు ఉపనిషత్తులు దాని యొక్క సారమే రాజయోగా మెడిటేషన్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. వీ హ్యావ్ a 7 days course over here, and if you can take out time and undergo this course, then as brother very well said that without all these things we cannot do our job properly, also we cannot do justice to the job. Thank you very much brother Ishwar Reddy garu. Thanks once again. And now very very spiritual personality among us, Rajyogini Didi Asha ji. She will be, blessing all of us with her words of wisdom on the topic of this seminar, values and spirituality for better governance. Didi ji has been practicing meditation from her childhood. Presently, she is the director of our Northern India campus, which is called as Om Shanti Retreat Center. This is near Delhi, and she is the chairperson of this Administrators Service Wing. She also was the associate editor of our magazine Purity. And the Brahma Kumaris, we have a teachers training program for all those Kanyas who are interested to dedicate their life and become a Brahma Kumari sister in the ashram and give dedicated services. So we have a big training program, and sister respected Didi ji is the head of that program also. So many of us whom you see seated over here, so Didi ji is the instrument soul for giving us training in this our life as Brahma Kumaris also. So thanks once again for this, for remembering. I'm able to remember that again here. She has also represented the Brahma Kumaris at the UN's Decade for Women's Conference in Nairobi, and when she was very very young. And then also she was selected as the outstanding young person of the world for 1989 by JC's Junior Chamber International US for her invaluable contribution towards peace. So we have this a very experienced person. She will be blessing all of us, and I'm sure it's going to be very very helpful to us. Asha Didi ji. Om Shanti. Om Shanti. Are you tired of listening? Tired? Or you wish to listen more? Choice is yours. You want to listen? Okay. मैं ये कहूँगी, सिर्फ सुनिएगा नहीं, साथ साथ अपने आप से सवाल पूछते रहिएगा. Keep asking questions to yourself. We have been listening to very eloquent speakers, and they all spoke out of their experience. The administrators are supposed to make the task of people easy. In the process, if they get tensed up, if they get stressful, is it really service? सेवा वह है
जो स्वयं को भी सुख दे और दूसरों को भी सुख और संतोष दे। हम सब कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेवा। सेवा में तनाव नहीं मिलता, टेंशन नहीं मिलता। आप थोड़ा देखिए, घर में माँ है, माँ हर बच्चे के चॉइस, अपने पति की चॉइस उसको पूरा करती है। अगर बच्चे की चॉइस की चीज न हो, बच्चा खाना न खाए, उसे दुख होता है। ये मेरा काम है और मेरे काम से हर एक को सुख और संतोष मिलना चाहिए। हम सेवाधारी, हम समाज के सेवक हैं, सेवाधारी हैं, जिनके हाथ में पावर्स भी हैं। सोशल वर्कर्स के हाथ में वो पावर्स नहीं हैं, वो भी समाज के सेवक, लेकिन हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारे हाथ में पावर्स भी हैं। चेक ये करना है, क्या सच में मैं जो कार्य कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या सच में वो संतोष दे रहा है, सुख दे रहा है, मुझे संतोष दे रहा है? Am I satisfied? मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, मन ही मन अपने आप से सवाल करिए, Am I contented? Am I happy? Am I stress-free in my department? जो समझते हैं ऐसा, वो हाथ तो खड़ा करें। Not a single person. I want you to get into the depth of it and ask this question to yourself, what is it lacking? When I'm being paid by the government, I'm spending my valuable time in my office. How come I'm not satisfied? Why? I will not answer the question now, but I would request you, kindly don't ignore this question. Ask yourselves, what is it that is giving you stress? Such a nice thing, spirituality, governing with spirituality, with values. What is spirituality? Spirituality is not something where you have to do mala jap, where you have to chant mantras, where you have to go and sit and do meditation. This is not spirituality. Spirituality is simply living by the Spirit. Living by the Spirit. What is that Spirit? That Spirit is you, the soul. And what is that soul? Ask yourselves again. Who are you and what are you? What are you? Is there anyone
who doesn't want to be loved? Is there anyone who wants to be just ducked? Is there anyone who wants to be always peaceless? Anyone? No. Why? Because basically we are this. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a knowledgeful soul, wise. I am a happy soul. When I am doing something, it should give me happiness. What is the lacuna that I am not able to experience it? What is it? Is there selfish motive? Is there ego? Is there procrastination? Is it the spirit of avoidance? Is it just to ignore? Why? जब हम अपने आप को देखते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर आप हैं, आपकी सीट आपकी है, आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपको ही करना है. वर्क इज वर्शिप. Alas, it has become a worship. इसलिए अपने आप को देखिए. और मैं चाहूंगी बेसिक बातें. मेरा दिल्ली में रहना है और दिल्ली में जितने ये ऑफिसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, कोई ऑफिस ऐसे नहीं होंगे जहां बारंबार जाकर के इंस्टीट्यूशन के कार्य के निमित्त ऑफिसर से मिलना नहीं हुआ. मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके आगे रखती हूँ. प्रॉब्लम, एक गरीब आदमी, जो मेरी आंखों देखी है, गरीब आदमी गांव का आता है, उसको अपनी ज़मीन का कोई काम कराना है. वो बेचारा ढूंढता ढूंढता, वो तो शहर नहीं जानता दिल्ली, ढूंढता ढूंढता पहुंचता है, ऑफिसर के पास जाता है. उसको कहा जाता है अभी ठहर जाओ, अभी मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर ठहरो. वो बेचारा बैठ जाता है. थोड़ी देर के बाद फिर अपनी शक्ल दिखाता है. टू नो अवेल. और शाम हो जाती है और आराम से पिए बाहर निकल के आता है और कहता है भाई तुम्हारा काम आज नहीं होगा, कल देखा जाएगा. क्या हम सोचते हैं वो व्यक्ति कहाँ से आया, कितने धक्के खा कर के पहुंचा? दिल्ली शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई होटल को वो अफोर्ड नहीं कर सकता. वो कहाँ जाएगा? इस तरीके से हमें सुख मिलेगा क्या? नहीं. एक चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत सहयोग देती है, वो द स्पिरिट ऑफ एम्पथी. एम्पथी मीन्स पुटिंग योरसेल्व्स इन अदर्स शूज. अगर दूसरे व्यक्ति जो सामने आपके हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम है, अगर उसी चीज़ को खुद पे लगा लीजिए कि ये प्रॉब्लम अगर मेरी हो तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी. इसलिए वो जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो गिरीश भाई ने बहुत सुंदर रीति से 2611 के एग्जाम्पल से बतलाया, वो जो ह्यूमन एलिमेंट आपके अंदर है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसको मरने मत दीजिए. अपनी आंखें बंद मत करिए, कान बंद मत करिए.
उस आत्मा से जो आपके सामने आती है आप उसका कार्य करते हैं और उसका कार्य लॉफुल है, लीगल है, बाय द रूल्स है, कर देते हैं, तो इसमें जो ब्लेसिंग हमको मिलेगी वो आपको किसी तरीके से नहीं मिल सकती। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज, if you are able to do the work of the people in an easy manner, kindly don't postpone it. हमारे spiritual knowledge में एक सेंटेंस आता है, तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण means do it immediately. If you postpone it, everything will change. एंड वो कलम भी काम करने से रुक जाएगी। तीसरी बात, अपने आप से क्या कभी हम उस ईश्वर को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं? जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ काम करने वाले हैं, मेरे जूनियर्स हैं, आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी सिंगल पर्सन जो मेरी टीम में है। लव एज वेल एज रिस्पेक्ट। दे आर नॉट माई जूनियर्स, इट इज ए टीम, दे आर कोऑपरेटिंग विद मी। आज अगर आपका ऑफिस के सामने जो पियन बैठता है वो अपना काम करना बंद कर दे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी ना? दिल से थैंक यू। क्या कभी हमने उसके दिल से पूछा? हमारा भारत बहुत विशेष देश है। भारत में कर्म को कर्म योग कहा गया है। कर्म योग अर्थात जहाँ कर्म करते हुए परमात्मा से योग हो, उसकी संतान के प्रति शुभ भावना हो, वो है कर्म योग। वर्क इज वर्शिप वो तब बनती है। वर्क इज वर्शिप कोई ऐसे नहीं कि वी बिकम वर्काहॉलिक्स। आई डोंट एग्री देयर। वर्क इज वर्शिप डज नॉट मीन टू बी वर्काहॉलिक्स। वर्क इज वर्शिप मीन्स जहाँ वर्क से आपको संतोष मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और साथियों को मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, वो वर्क इज वर्शिप है। इसी रीत से आपके साथी जो कार्य करने वाले हैं, क्या कभी हमने उनसे पूछा? आज मैं देखती हूँ मेरी जूनियर का मूड अपसेट है, क्या मैंने कभी पूछा? ये अंतर है बड़ों में और आज में, हमारे पूर्वजों में और हम में। क्या पता वो बेचारा किस प्रॉब्लम का सामना करके आ रहा है। अगर हम 2 शब्द उससे बात कर लेते हैं, प्यार से बात कर लेते हैं, उसकी वो प्रॉब्लम भी खत्म होती है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है, कार्य भी आपका होता है। जिसका मूड अपसेट है वो आपका कार्य क्या करेगा? आपको हानि है। इसलिए जिसको हम कहते हैं ब्रदरली फीलिंग, फैमिली फीलिंग, अगर हम उनको दें तो वे साथी आपको बॉस नहीं परंतु माता पिता के रूप से देखेंगे और कार्य भी दौड़ दौड़ के करेंगे। गिव एवरी पर्सन रिस्पेक्ट। आई कैनॉट फॉरगेट Dr. Abdul Kalam ji. When Dr. Abdul Kalam ji was to come to Mount Abu, we went to invite him. He asked his secretary to come. And you know how he introduced his secretary? He said, "Sister, he is the pillar of my office. He is the pillar of my office." Which means, and I know him very well, he used to stay awake
Do everything for Dr. Abdul Kalam. He is there in the morning, he is there at the night, he is available every moment. क्यों नहीं करेगा कोई व्यक्ति? आप उसको महत्व दीजिए. अगर हम ये कहेंगे क्या है ये कुर्सी उठाने वाला ही तो है ना. आप ऑफिसर हैं, आपके अगर कुर्सियां ठीक से नहीं लगी हैं, इट शोज यू. इट डज नॉट शो हिम, इट शोज यू. वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो मैं तो नहीं कर रही. उसके कार्य को महत्व दीजिए, उसके कार्य को वैल्यू दीजिए, उस व्यक्ति को वैल्यू दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए. आप देखिए आपका कार्य कैसे होता है. हमारे देश की पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट को आप जानते हैं वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है. एक बार एक स्पीकर से मैंने पूछा, हाउ डू यू कंट्रोल ऑल ऑफ देम? ही स्माइल्ड एंड सेड, सिस्टर, I cannot control them. I only control myself. When I control myself, I am able to take care of them. Similarly, wherever we are, आज जो हमको लेसन मिला, माउंट आबू से जो आया लेसन हम लोग को मिला, उसमें यही बात थी कि आपको धर्म और धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता दोनों को जोड़ करके चलना है. धर्म सत्ता क्या है? ट्रूथ एंड प्यूरिटी. ट्रूथ मीन्स seeing the things as they are. That is truth. Seeing the things as they are, keeping aside your assumptions, your beliefs, your other systems. See the thing as they are. And when you look at the things as they are, you develop better understanding. Understanding is better, analysis is better. When analysis is better, consequence will be definitely better. Hence, truth. और दूसरी चीज है, ट्रूथ क्या है? परिभाषा अगर हम ट्रूथ की दें, जो था है और रहेगा, वो ट्रूथ है. जो था है और रहेगा. और दूसरा प्योरिटी. Purity means transparency. Earlier, a few years back, no transparency, but now little transparency is being introduced and people are happy about it. Because जो बात जो है जैसी है, अगर हम उसको औरों के आगे प्रत्यक्ष कर देते हैं, लोग अंडरस्टैंड करते हैं, स्वीकार करते हैं. We want things to be accepted by the people, but it depends how we are presenting it. क्या मैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर रही हूँ? क्या मैं सच में ट्रांसपेरेंट रीति से बोल रही हूँ? जब ये है तो लोग एक्सेप्ट करेंगे. इसी रीति से जो पावर है, स्वराज अधिकार, मीनिंग कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योर माइंड, control your intellect, control your actions. Mind का क्या control है? Cleanliness and clarity. If there are waste thoughts due to ego, hatred, jealousy and animosity, मेरे पास फाइल आती है दूसरे डिपार्टमेंट से जिसने मेरा काम नहीं किया, और मैं मन में सोच के रखती हूँ, आने दो इनकी फाइल, मैं भी देखूंगी. Who is suffering? Who is suffering? Are you suffering? You are trying to satisfy your ego. People are suffering. Do you think they will give you blessings? Definitely not. Hence, if I keep my intellect clean, clear, decision making will be better, analysis will be better,
And when I implement it, it will come out with good results. And to keep the mind clean and clear, we need meditation and little attention on the self. What we call traffic control of thoughts. Keep a watch on your thoughts. We keep watching others. Instead of watching others, watch your thoughts. Wasteful thoughts about past, future, about those things with which we have nothing to do, they eat away our energy and they blur our vision. Hence, cleanliness and clarity is essential. And this comes when we practice little meditation, when we are positive towards the self. Meditation simply means thinking. Thinking about what? It comes from the Latin word medere, which means to heal. Heal what? Heal the wounds on the soul. What are those wounds? Anyone free of jealousy, anger, hatred? Tell me. No. Leg pulling? No. These things eat away our abilities, our energy, our time. And I would request all those in the field of administrative service to keep away from these enemies. Enemies are not people, but it is these things that are our enemies. And when I keep a watch on my thoughts, I practice silence. In silence, you are able to see what is happening in your mind. Give yourself 2 or 3 minutes after every 2 to 3 hours. Open the computer of your mind. Look at the screen, what is going on. And then, if it needs diversion, divert it. This is what we call applying SOS method. Stand back, observe and steer. Steer your mind toward the direction in which you want it to go. आप दिन में 4-5 बार ये करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आएगा. जो स्माइल गिरीश भाई ने कही, वो स्माइल नेचुरल रूप में रहेगी. नेचुरल रूप में. अब आप कहेंगे ये करेगा कौन? पहले दूसरा करे तो मैं करूं? कितनों का मन करता है कि पहले दूसरा करे तो मैं करूं? वो हाथ खड़े करो. तो कौन करेगा? पहले आप. पहले आप. फर्स्ट यू. श्योर? श्योर? Yes? Okay. I end with a small little story. It seems there were 2 boys who were given baskets full of roses. And the first boy was asked to go around Hyderabad and whoever smiles to give 1 rose out of the basket to that person. ठीक है. बच्चा सारा दिन घूमा, घूम करके वापस आया. दूसरे को भी यही कहा गया, तुम भी जाओ और जो मुस्कुराता हुआ मिले उसको फूल एक दे देना. तो पहला बच्चा शाम को वापस आ गया, बास्केट फुल ऑफ रोजेस. टीचर ने कहा, why you didn't find anyone smiling? He said, sir, हैदराबाद में कोई स्माइल करता ही नहीं है. सब इतने स्ट्रेसफुल हैं, दौड़ते भागते रहते हैं. हैदराबाद बदल गया है, कोई हंसता ही नहीं है, कोई नहीं स्माइल. सर ने कहा, अच्छा ऐसी बात,
ठीक है। थोड़ी देर में दूसरा बच्चा आया, उसकी सारी बास्केट खाली। सर ने कहा तुम कौन से सागर में, यहाँ कौन सा सागर है, हिमायत, हाँ, हुसैन सागर, तुम हुसैन सागर के कौन से बैंक में जाकर के फूल गिरा के आए? उसने कहा सर आपने फूल गिराने को नहीं बोला था, आपने कहा था जो मुस्कुराए उसको देना। तो मैंने देखा कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा है, तो मैंने एक युक्ति की। मैं एक के पास गया, पहले मैं मुस्कुराया तो वो मुस्कुरा दिए, मैंने एक फूल उसको दे दिया और इस प्रकार सारी बास्केट खाई। तो आप बताओ भाइयों बहनों, ये सारा जो आज आपने 3 घंटा सेशन सुना, आप में से कितने जो प्रतीक्षा करेंगे दूसरों की और कितने जो खुद से शुरुआत करेंगे? आज के सेशन से जो अपने साथ कोई अच्छी चीज़ लेकर के जा रहे हैं और प्रैक्टिकल आप करेंगे, वो हाथ तो खड़े करो। मैं देखूं तो सही भाई, मंच देखे तो जिनके हाथ नीचे, इसका मतलब उनको कुछ नहीं मिला आज। हाँ, सबके हाथ ऊपर है, सबके हाथ ऊपर है, वेरी गुड। यही कहूँगी प्यारे भाइयों बहनों, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऐसा है जिसमें आप दुआएं 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 कमा सकते हो, ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स। ये आपका महकमा है, आपका फील्ड है। इसलिए घर जब लौटो तो अपने आप से रोज पूछा करो, आज मैं कितनी ब्लेसिंग्स लेकर के वापस लौट रहा हूं। होगा मैं रोज कितनी ब्लेसिंग्स लेके लौट रहा हूं। फिर आप देखिए आपको कितनी हैप्पीनेस और स्माइल आपके फेस में परमानेंट रीत से रहती है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति। Om Shanti. As Didi ji was speaking to all of us, it was not like a speech, it was like a Didi and elder sister, a mother, speaking to the children as to how you can actually earn lot of blessings in your life, is it not? So on the YouTube, this program is being live, the telecast is going on, so it's on the YouTube, Shanti Sarovar. If you do, you will get this program. So not for today, but on a daily basis, listen to Didi's speech. Then I am sure you will remain ever enthusiastic and be really the one to do the good governance. So thank you Asha Didi ji. And yes, I request Manju Didi ji to join us on the stage. Now meditation will be conducted, and in which Manju Didi from Secunderabad, she will also be joining in the meditation. We have Lakshmi Didi ji from Delhi, who is going to conduct the meditation. She is the executive member of the administrators wing, and especially from Delhi she has come to participate in this program. और लक्ष्मी दीदी जी अब हम सबके लिए मेडिटेशन कंडक्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी यदि थक गए हैं सुबह से बैठे बैठे, तो 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए।
क्योंकि बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। थोड़ा सा स्माइल कीजिए, अपने साथ वालों को स्माइल करके एक बारी देखिए, बहुत सारा प्यार बरसा दीजिए। बहुत अच्छी प्यार भरी सोल आपके साथ है। अब दूसरी साइड भी थोड़ा सा घूम जाइए, उनको भी प्यार भरी नज़र से देख लीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। निराकार परमपिता परमात्मा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उस परमात्मा पिता की असीम कृपा से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मंच पर हमारे सम्माननीय आदरणीय वक्तागण हैं और सभा में आप सभी मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई बहन बैठे हैं। अभी हम सुन रहे थे कि वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन में लाएं और बेटर गवर्नेंस करें। तो गीता में कहा गया है कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। मन के जीते जीत जगत में, मन के हारे हार है। जिसने मन को जीत लिया है उसने सब कुछ जीत लिया है। अब प्रश्न उठता है कि मन को जीता कैसे जाए, तो उसके लिए यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो 7 डेज़ का कोर्स होता है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसका टेस्ट करेंगे। जैसे कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास जाता है और नई जो रिसर्च होती है मेडिसिन्स, उसका एक सैंपल छोड़ करके आता है और डॉक्टर को कहता है कि आप इसको यूज़ कीजिए और अच्छा लगे तो इसको प्रेस्क्राइब कीजिए। तो आज हम भी यहाँ पर आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक सैंपल देंगे, जिससे आप अनुभव कर सकेंगे कि अपने मन को किस तरह से हम खुश रखें। इस मन के द्वारा हम कैसे वैल्यूज़ को अपने जीवन में लाएं, स्ट्रॉन्ग बने, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, वेल्थ भी अच्छी रहेगी और हैप्पीनेस भी रहेगी। तो हम IAS भी बन गए, IPS भी बन गए, IFS भी बन गए सभी बने। हाथ खड़े करो जरा, कौन कौन बने। अच्छा, वो सब यहाँ तो स्पिरिचुअल मीनिंग बताया है, दुनिया में तो वो भी एक तरह के सर्वेंट ही हैं, गवर्नमेंट जॉब ही है, सर्विस है। लेकिन अभी हम आपको राजा बनने का, कि कैसे आप राजा बने। वैसे तो इस दुनिया में मंत्री बनते हैं, इलेक्शन होता है, लेकिन आपको इलेक्शन में भी खड़े नहीं होना है। लेकिन परमात्मा ने आपका
राजा बनने के लिए सिलेक्शन कर लिया है। तो आज आप अपने लिए ताली बजा दीजिए। तो आप ये राजयोग सीख करके, क्योंकि राजयोग का मतलब ही यही है कि आत्मा उस सुप्रीम पावर से, उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो और उससे पावर ले, शक्तियाँ ले और अपने मन की राजा बने, स्व की राजा बने, अपने इंद्रियों की राजा बने। और ये सब योगों का राजा है ये राजयोग। इसीलिए कहा जिसने मन को जीता है उसने जग को जीता है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास करेंगे इसका। आप सभी करेंगे। अलर्ट, किसी का मोबाइल अगर बीच में बचने की संभावना हो तो प्लीज़ आप उसे साइलेंट मोड पे कर दीजिए और आप थोड़ा सा स्ट्रेट होकर के बैठेंगे राजा की तरह, क्योंकि अब हम राजयोग करने वाले हैं। तो राजा की तरह बैठेंगे और मैं आपको कुछ विचार दूंगी और वो विचार इस देह से डिटैच होकर के, इस शरीर से डिटैच होकर, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कोई भी चमड़े की चीज़ है, जूता चप्पल है, उसे बाहर निकलवा दिया जाता है। उसी तरह से वो तो हम सिर्फ मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, लेकिन यहाँ हम साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे। तो इसीलिए इस देह को, ये भी एक चमड़ा है, इसको भी थोड़ी देर के लिए डिटैच कर दीजिए। तो मैं आपको कुछ विचार दूंगी, उसके अनुरूप आप अनुभूति करते जाइएगा। चाहे तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मेडिटेशन हम आंखें खोल करके सिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म योग है। विजुलाइज कीजिए, नुमा शाम का समय है, दिन ढल रहा है, रात्रि अपने आगमन पर है, अंधेरा होने लगा है। उस अंधेरे में आसमान की ओर देखें तो आसमान में सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। कोई कम चमक वाला, कोई अधिक चमक वाला सितारा है, कोई सितारा नजदीक है, कोई सितारा दूर है। ऐसा ही एक चमकता हुआ सितारा इस शरीर के मस्तक में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर विराजमान है। ये सितारा मैं आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक पावर हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। ये एनर्जी बॉडी में है तो मैं आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ। ये शरीर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, पर इंस्ट्रूमेंट से कार्य करने वाली मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ।
पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, इमॉर्टल हूँ। ये शरीर मॉर्टल है, विनाशी है। अब कुछ क्षणों के लिए इस बॉडी से डिटैच होकर इस हॉल से बाहर खुले आसमान में अपने को महसूस करें और अनुभव करें ये मैं एनर्जी ऊपर की ओर जा रही हूँ, एक ज्योत की तरह धीरे धीरे और ऊपर, धीरे धीरे और ऊपर। पूरा हैदराबाद शहर दिखाई दे रहा है, पूरा तेलंगाना दिखाई दे रहा है, और ऊपर और ऊपर पूरा इंडिया दिखाई दे रहा है, उससे भी ऊपर बादलों से पार, नक्षत्रों से पार। मैं पहुंच गई हूँ एक लाल सुनहरे प्रकाश के धाम में। नीले आकाश की तरह वो लाल सुनहरा प्रकाश का आकाश है, जहाँ चारों ओर स्वप्रकाशित लाल प्रकाश है, लाइट है। यही मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर है, जहाँ से मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल प्ले करने आई, परंतु एक्चुअली मैं एक सोल हूँ। यही हम सब आत्माओं के पिता सुप्रीम पावर गॉड फादर मेरे परम पिता रहते हैं। वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, उनका नाम शिव है। वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया है कि मैं उनकी संतान ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अब उस सुप्रीम पावर से आप कनेक्ट हो जाइए, उनसे कन्वर्सेशन कीजिए। बाप और बच्चे के संबंध से, बाबा आप प्रेम के सागर हैं, मैं आपकी संतान प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओ गॉड फादर, माय डियर फादर, आप शांति के सागर हैं। मैं आपका चाइल्ड, मैं आपका बच्चा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप सुख के सागर हैं, मैं आपकी संतान सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आप सर्वशक्तिवान हैं, आपसे मुझे सर्व शक्तियों की अनुभूति हो रही है।
आप मुझे कितना प्यार करते हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। ये शक्ति, ये शांति, ये खुशी की अनुभूति लेते हुए अब मैं उस ज्योति के देश से नीचे की ओर आ रही हूँ। धीरे धीरे उस लाल प्रकाश के धाम से नीचे, नक्षत्रों से नीचे, आसमान से नीचे, बादलों से नीचे, धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे आते हुए इस हॉल में अपने शरीर में अपने को महसूस कर रही हूँ मस्तक के बीच में। अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स, मेरा चेहरा एकदम रिलैक्स, मेरे कंधे एकदम रिलैक्स, मेरे फेफड़े शांति की श्वास ले रहे हैं, मेरा हार्ट एकदम नॉर्मल गति से चल रहा है, लीवर, पैनक्रियास, किडनी सब नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। ब्लड के साथ साथ ये खुशी और शांति का भी प्रवाह पूरी बॉडी में फैल रहा है। और मैं एक शांत स्वरूपात्मा, प्रेम स्वरूपात्मा, सुख स्वरूपात्मा इस कर्म क्षेत्र पर हर कार्य मैं खुशी से करूं, प्रेम से करूंगी, शांति से करूंगी, ट्रांसपेरेंसी से करूंगी, सत्यनिष्ठा से करूंगी, ईमानदारी से करूंगी और खुद भी सुख लूंगी और सबको भी सुख दूंगी। ओम शांति शांति शांति। अभी आंखें खोल लें, एक लंबी श्वास लें और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नेगेटिविटी भी बाहर कर दें। पुनः एक लंबी श्वास लें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नेगेटिविटी भी बाहर। अभी आप अपने हाथों को मसल सकते हैं और लगा सकते हैं। ऐसे ही बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर बहुत एनर्जी की फीलिंग होगी और पुनः आपकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। बहुत अच्छा योग का अनुभव कराया, लेकिन आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए। इफ़ यू वांट टू नो मोर ऑन हाउ टू मेडिटेट, you please get in connection with your local centers or those who have invited you to this program. They will be able to guide you to your meditation centers near your houses. All the programs which we do are free of cost. Okay, make yourselves free and go for this meditation program. It will be very helpful. Towards the end we have Manju Behan from
Secunderabad. 2 words of greetings for this program. And some of you were saying you want to take away from this program. You can share it from there. The mic will be passed over there. Rajesh bhai, 1-2 mic वहाँ पर. Who is interested to give their treatment? Okay, 1 or 2, because looking at the time and sister's time is also so valuable. So we will take 2 or takeaways from these programs. But initially, Manju Bain will be giving greetings on this occasion. ओम शांति। सम्मानित मंच और सभा में पधारे हमारे मेहमान भाई बहनें, आप सब बहुत समय से सुन रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को ऐड करने से, वैल्यूज़ को ऐड करने से आप अपने फील्ड में कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी पॉइंट कहूँगी कि आध्यात्मिकता क्या है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर से, अपने अपने ऑफिस में, लेकिन आध्यात्मिकता माना आत्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है उसको एक करना, समझना कि आत्मा क्या है। मैं जो इस कुर्सी पर बैठा हूँ, जो मुझे ड्यूटी मिले है, तो मैं ड्यूटी करने वाला कौन, और जो मेरे अंदर एबिलिटी है जिस कारण मुझे ये जॉब मिले है, तो सिर्फ मैं ही नहीं लेकिन एक और भी शक्ति है जो मुझे इस कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। उस परमात्म शक्ति को भी पहचाने और उनको साथ लेकर उनकी शक्ति को यूज़ कर अपने फील्ड में, अपने डिसीजन मेकिंग में उसको एक्सपीरियंस करें और उसका प्रैक्टिकल में फीडबैक सबको मिले। डिसीजन मेकिंग में परमात्मा की पावर क्या होती है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तो आप अपने फील्ड में अपनी सीट पर जब बैठे तो एक संकल्प से बैठे, अर्थात आपका अपना सेल्फ एस्टीम लो नहीं हो लेकिन हाई हो, और परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाकर उनकी शक्ति से आप उस कार्य को करें और उसका फीडबैक क्या होता है उसका एक्सपीरियंस करें। तो आप अपने फील्ड में ज़रूर सक्सेस प्राप्त करेंगे। यही मेरी गुड विशेस है। और बहुत बहुत आप सब यहाँ पहुँचे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू मंजू दीदी जी। यस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड। I am Ram Mohan Namile, retired Chief Manager, Indian Bank, and I am a frequenter to Brahma Kumari. Been to Mount Abu also on 2 occasions. My takeaway is that BFPTA, I use a lot of short forms of my own. Be the first person. Be the first person always in what? In all good things, in all right things, in all positive things. This is one thing. Second thing what I got is that real and virtual, we have 2 worlds, real and virtual. Similarly, natural and artificial. As Didi was referring to Girish ji, that he has a natural smile. Very few people have a natural smile. Some people are very grief-faced. In a very light vein, I share that we should have a smooth rubber patch inserted above the teeth, below the lips, in such a way that their face turns to be
smiling. If not naturally, at least artificially. This I wanted to share. Thank you. Oh, thank you very much. Okay, so towards the end, now we have Shakti Behan, who is coordinating the whole program, and she is the one who was responsible that all of you come here and participate. So she is in charge of our Shamshabad center near the airport. So she will be giving the vote of thanks. ओम शांति। आज की इस फेस्टिवल के दिन का हो, आप सब यहाँ उपस्थित हैं और इसका पूर्ण श्रेय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ईश्वर, सो हम सब जिस भी रूप में అల్లా జెహోవా ఏ పేరుతో పిలిచినా ఆ పరమాత్మకి మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఓం శాంతి అంటూ కృతజ్ఞత తెలుపుకుందాం. అంటారా నాతో పాటు అందరూ ఓం శాంతి అని? ఓం శాంతి. ఎందు గురించి అంటే మీకు స్టార్టింగ్లో సిస్టరు ఇప్పుడు కూడా మెడిటేషన్ చేయించారు. బ్రదర్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఫుల్ ఫామ్ చెప్పారు. ఓం అనగా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో పరమాత్మకి మొదటగా మనం కృతజ్ఞత తెలుపుకున్నాం. తర్వాత వారిని ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి ఈ యొక్క సందేశం అందింప చేయటానికి కొద్దిమంది కారణ జన్మలు ఉంటారు. అలాగా आज की कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम श्रद्धेय परम आदरणीय आशा दीदी जी है. आप गोल्ड मेडलिस्ट और इतना इंटेलेक्चुअल होते हुए भी इस ब्रह्मा कुमारीज का जब आप ट्रेनिंग कराते हैं तो ये आज का जो टॉपिक है वैल्यूज़ स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस, आप सब ओआरसी जहाँ दीदी जी डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे, जाना चाहेंगे दिल्ली ఓం శాంతి రిట్రీట్ సెంటర్? ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే. తప్పకుండా మనకు పంపించిన వాళ్ళకి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారనుకోండి, दीदी सभी ओआरसी भी आना चाहेंगे तो ज़रूर बीच बीच में साल में కొన్ని సంవత్సరంలో కొన్ని నెలలు కొన్ని మంత్స్లో ఒక 3 to 4 days ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఓం శాంతి రిట్రీట్ సెంటర్లో. సో మీ అందరికి కూడా సిస్టర్స్ ద్వారా ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. सो उस दीदी का कैसे कृतज्ञता या हम थैंक करेंगे आशा दीदी जी के लिए? दीदी जी ने हैदराबाद में क्या कहा? फूल बिक जाएंगे या रह जाएंगे? మనం బతుకమ్మ పంపినట్టు నీళ్ళలో లంపేద్దామా, మరి మన ముఖంలో చిరునవ్వు తీసుకొద్దామా? चलो दीदी चेहरे से स्माइल से आपको सभी धन्यवाद दे रहे हैं. और साथ साथ विशेष रूप में जी, तो दीदी जी ने देखिए कितनी शार्प है, शार्प एडमिनिस्ट्रेटर है, हम सबको सिखाते भी है. तो नवंबर 16 to 22 एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फ्रेंस है ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में. तो दीदी के लिए हम एक बार करतल ध्वनि से धन्यवाद करते हैं. और हरीश भाई जी ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम के लिए ये तेलंगाना में हैदराबाद सेलेक्ट किया और ऑल ओवर इंडिया से सभी को मोटिवेट किया. पिछले 3 दिन से सदा मैं उपस्थित हूँ इस रूप में. सबको मतलब ऑल ओवर इंडिया से लगभग 200 भाई बहनें पहुँचे हैं. तो इसका कॉन्फ्रेंस के लिए भी भाई सबका उम्मीद था ज़रूर ऑडिटोरियम में करना. हमारा एक स्मॉल हॉल है इनर स्पेस, तो हम लोग वहाँ संकल्प करे थे. पर हरीश भाई जी का बहुत उमंग उत्साह रहता है और बहनों को उमंग देते हुए आगे बढ़ाते हैं. आप एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो माउंट आबू है, आप वहाँ का कोऑर्डिनेटर है. आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. भाई साहब भी ज्ञान सरोवर में आप सबको निमंत्रण दिया. और अंजलि बहन जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अंजलि बहन ने काफ़ी ग्रुप्स को मधुबन लेकर गए और उसमें सिंगरेनी माइंस जो डिपार्टमेंट है टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ज्ञान सरोवर कॉन्फ्रेंस के लिए 3 days लेकर गए थे. इस प्रकार आपके डिपार्टमेंट के द्वारा भी हो सकता है. और हमारे बीच आदरणीय कुलदीप दीदी जी है. तो आप ये पूरे शांति सरोवर आप आगे ब्रह्मा भोजन में जाएंगे. ఈ క్యాంపస్ యొక్క ఒక్కొక్క స్థానం యొక్క అందమనండి, ఆధ్యాత్మికత అనండి, అలౌకిక ఆనందం అనండి,
వారు చిన్న బాల్యం నుండి ఈశ్వరీయ జ్ఞానంలో ఉంటూ ఎలాంటి విధమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినా, ఏ విధమైనటువంటి అవకాశాలు వచ్చినా పూర్తి మన భాగ్యనగరం యొక్క భాగ్యంను, అనగా భాగ్యం, దేశం అంటే మట్టి కాదు మనుషులు అంటారు కదా. సో మనందరి భాగ్యం ఎందులో తయారవుతుంది? ఆధ్యాత్మికతతో, అంతే కదా. కొన్నిసార్లు చూడండి, ఎంత మంచిగా కష్టపడినా ఫలితం ఉండదు, కొన్నిసార్లు కొంచెం కష్టపడగానే. సో అలా ఆ భాగ్య విధాతతో మనందరినీ కనెక్ట్ చేయడానికి కాన్ఫరెన్స్కి వారి విధమైనటువంటి ప్రాంతం తయారు చేయటం, ఇంత మంచి ఆడిటోరియం మీకు ఎక్కడైనా కనపడిందా? ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో మనం కుల్దీప్ బెంజీ గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తాము. దీది గారి ఆధ్వర్యంలో మన ఈ యొక్క శాంతి సరోవర్ క్యాంపస్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఎంఏ అండ్ యూడి, ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్టీసీ అయితే ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతుంటాయి. ఇంచుమించు మన తెలంగాణ యొక్క అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ లాభం తీసుకున్నారు. సో నెక్స్ట్ వీక్ అంటే 30 జూలై నుండి 16 సెప్టెంబర్ వరకు ఇక్కడ ఎంపవరింగ్ ద ఫ్యామిలీ అని తెలంగాణ క్యాంపెయిన్ ఉంటుంది. ఉమెన్ వింగ్ ఆఫ్ బ్రహ్మకుమారిస్ నుండి ఇది ఆయోజన చేయడం జరుగుతుంది. సో మేము ఈ ఆఫీసెస్లో కూడా ఈ టాపిక్ పైన చాలా చక్కని సెషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ లాస్ట్ 16th జూలైకి ఇక్కడ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం అనేది ఈ క్యాంపస్లో ఉంటుంది. దానికి కూడా మీరు అందరు ఆహ్వానితులే. సో కార్డ్ సహితంగా మీ ముందుకు వచ్చేసింది చప్పట్లతో. ఓకే, దాంతో ఒక యాక్టివ్నెస్ కూడా మన శరీరంలో వస్తుంది, రక్త ప్రసరణ మన అందరి ఇందులో ఉంటుంది. और हमारे बीच 30 జూలై నుండి 16 సెప్టెంబర్ వరకు క్యాంపెయిన్ ఉంటుంది. మన క్యాంపస్లో ఇక్కడ 16 సెప్టెంబర్ రోజున చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క స్టాల్స్ కూడా బృందావన్ గార్డెన్లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దానికి అందరూ ఆహ్వానితులే. పూనం దీది గారు రాజస్థాన్ నుండి వచ్చారు. వారు తన యొక్క, మనం భక్తిలో చెప్తాం కదా, గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైనది వింటే ఆ విధమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం తయారవుతుంది. సో వారు ఒక అభిమన్యుడనండి, భక్త ప్రహ్లాదు మాదిరిగా వాళ్ళ తల్లి గర్భం నుండి జ్ఞానం వింటూ ఈ ఆధ్యాత్మిక సేవలు అంకితమైనారు. వారికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. లక్ష్మీబెన్ జీ గారు, వారు కూడా తమ పరివారంతో दिल्ली में बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, वर्तमान समय अपनी सेवाएं दे रहे. आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. మన మధ్యలో యాక్చువల్గా మన స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీస్ ముగ్గురు ఉపస్థితి అయ్యేది ఉండే. మీ అందరికీ తెలుసు గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. సో ఆధార్ సిన్హా గారు కూడా ఈరోజే కొంచెం అస్వస్థత ఉన్న కారణంగా రాలేకపోయారు. కానీ వారు యానిమల్ అండ్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి, వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ నుండి కొద్దిమందిని డెప్యూట్ చేశారు. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా రజత్ కుమార్ గారు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి కూడా కొద్దిమంది వచ్చారు. చేతులు ఎత్తండి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చినవారు. సో వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియచేద్దాము. అదేవిధంగా దానకిషోర్ గారు రాలేకపోయారు, కానీ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి కొద్దిమందిని డెప్యూట్ చేశారు. వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఓకే. సో అదేవిధంగా డాక్టర్ ఎన్ సత్యనారాయణ గారు కూడా సిడిఎంఏగా రీసెంట్గా రిటైర్డ్ ఆర్ఈఆర్ఏలో ఉండే, వారు కూడా కొన్ని కారణాలతో రాలేకపోయారు. బట్ సజ్జనార్ గారు ఆర్టీసీ నుండి, వారు కూడా చాలా వెల్విష్, రావాలనుకున్నారు కానీ లేచి నిలబడవచ్చు. ఆర్టీసీ నుండి కొంచెం ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆర్టీసీ సోదరులు ఉపస్థితి అయి ఉన్నారు. ఓకే, కొంచెం వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ రెయిన్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ అలర్ట్గా ఉంటారు, అందుకని ఎక్కువ మంది రాలేకపోయారు. కొంచెం వారందరికీ, మరి చేరుకున్న మీ అందరికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మన మధ్యలో ఇండియన్ బ్యాంక్ నుండి ఐ చంద్రప్రకాష్ జీ గారు వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ని డెప్యూట్ చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మన మధ్యలో కట్టొచ్చు, గట్టిగా చప్పర్లకు ట్యాక్స్ లేదు, మీ పైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ కూడా జరగదు. సో ఈశ్వర్ రెడ్డి గారు अपने बीच में उपस्थित है, బయోలాజికల్ లిమిటెడ్, వారు కూడా వారి డిపార్ట్మెంట్ నుండి కొంతమందిని డెప్యూట్ చేశారు. వారికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అందరికీ ప్రాక్టికల్గా మేము స్పిరిచువాలిటీని ఎట్లా అప్లై చేయాలి, డెడికేషన్ మన రోల్లో ఎలా ఉండాలి అనేది గిరీష్ అన్నయ్య గారు స్పష్టం చేశారా? ఆ క్లారిటీ వచ్చిందా? గట్టిగా వారికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా యాక్టివిటీ టైంలో ఎవరెవరు చేరుకున్నారు? విధాత్రి అక్కయ్య గారు ఐస్ బ్రేకింగ్ యాక్టివిటీ చేయించారు కదా, చేతులు ఎత్తండి. యాక్టివిటీ టైంలో చేరుకున్నవా? 2 చేతులు, లేదంటే లేచి నిలబడండి, కనపడట్లేదు. సో విధాత్రి అక్కయ్య గారు కూడా చాలా చక్కని ఫ్యాకల్టీ, చక్కగా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు. వారికి కూడా మనందరం కర్తల ధ్వనితో ధన్యవాదాలు తెలియచేద్దాము. ఈ పూర్తి ప్రోగ్రామ్ మీ అందరు పడుకోకుండా చురుకుగా ఉండడానికి, ఎందుకంటే చక్కగా ఏసీ ఉంది, చల్లగా ఉంది,
అంజలక్కయ్య గారు మీకు కళ్ళు మూయనిచ్చారా? మరి అంజలక్కయ్య గారి గురించి కూడా గట్టిగా థ్యాంక్ యూ. సో అదేవిధంగా జంట నగరాల్లో మన ब्रह्मकुमारीज़ 60 ब्रांचेस ఉన్నాయి. ऑल ओवर ट्विन सिटीज़ में मोर देन 60 ब्रांचेस है. तो जैसे दीदी ने कहा आप सबको ही कोई भी शाखा में जाकर के इस मेडिटेशन का लाभ ले सकते, पर सभी बहनों ने लोकल ट्विन सिटीज़ के जो भी बहनें हैं आप सबको यहाँ लाने में बहुत मेहनत किया और उन सब बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. సో ఇందులో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ నుండి కూడా ఉన్నారు. సో మీ అందరికీ ఒక్కొక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మరి కార్యక్రమంలో సంపన్నం చేయటంలో భాగస్వాములైనటువంటి అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. वुमेन विंग कैंपेन फोल्डर्स एंड पोस्टर्स डिस्ट्रिक्ट से जो बहनें आए हुए हैं हैदराबाद या सिकंदराबाद की बहनें वो ज्ञानयोग भवन में रिसेप्शन से प्राप्त कर सकते हैं. లోకల్ సిస్టర్స్ అందరు కృషి చేయటం వల్ల మీ అందరు కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి రాగలిగినారు. అన్నింటికంటే నెక్స్ట్ మీ అందరికీ ఇష్టమైంది కడుపులో జఠరాగ్ని మండుతుందా? సవికే पेट में चूहे हैं नहीं है, आराम से बैठे. चलो आप सबके लिए आज विशेष ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया है. तो आप आम प्रोग्राम्स में जब जाते वो भोजन और ये भोजन का महत्व तो बहुत अंतर होता है. फिर आप जब ट्विन सिटीज़ में सेंटर्स में जाएंगे आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा. और ग्रुप फोटो भी रहेगा और एक हमारे बीच में उपस्थित मेहमान के लिए हम गिफ्ट गॉडली गिफ्ट है ब्रदर ఈశ్వర్ రెడ్డి గారికి సిస్టర్స్ ఈశ్వరీయ బహుమతి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. తోడే అనౌన్స్మెంట్స్ డైనింగ్ హాల్ ఒక్కటే ఉంటుంది. సో డైనింగ్ హాల్లో మీరందరూ భోజనం చేసే సమయంలో అడ్మిన్ వింగ్ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన వాళ్ళకి हॉल नंबर 2 एंड 6 जो भारत के चारों स्टेट से आए हुए हैं, सेकंड एंड डाइनिंग हॉल नंबर 2 और 6 जो रोज़ ले रहे हैं वहीं पर रहेगा. ఇంకా కాన్ఫరెన్స్లో వచ్చినటువంటి అతిథులందరికీ కూడా డైనింగ్ హాల్ నెంబర్ 1, 3, 4, 5 ప్రశాంతంగా చుట్టూ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందుతూ భోజనాన్ని స్వీకరించగలరు. అన్నం పరబ్రహ్మం అంటాం కాబట్టి వృధా చేయకుండా కావలసినంతగా తీసుకోగలరు. 7 days ఫౌండేషన్ కోర్స్ బ్రహ్మకుమారీస్లో మెడిటేషన్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఎవ్రీ మండే టు సాటర్డే ఉంటుంది. మార్నింగ్ 7 to 8, ఈవినింగ్ 7 to 8. और जो भी मेडिटेशन सुनना चाहेंगे यहाँ गच्चीबोली शांति सरोवर के नज़दीक है तो यहाँ आ सकते हैं, या आपको जो नज़दीक ब्रांच रहेगा उसका एड्रेस आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क में मिलेगा. आपके नज़दीक की ब्रांच का एड्रेस మీ బ్రాంచ్ దగ్గర మీ ప్రాంతానికి దగ్గర ఉన్న బ్రాంచ్ అడ్రస్ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్లో తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ శాంతి సరోవర్లో విశేష్ పిల్లలు ఈరోజు రేపుల్లో ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. మరి పిల్లల్లో కూడా ఎప్పుడైనా కూడా అందరూ ఏమని చెప్తారంటే మార్పు అనేది ముందు నుండే స్టార్ట్ అవ్వాలి. కాబట్టి పిల్లల గురించి విశేషంగా బాల బృందావనం అనే కార్యక్రమం ప్రతి ఆదివారం 6 గంటల నుండి 7:30 వరకు ఉంటుంది. आपके बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है या जो भी हैं उन सबको इस चिल्ड्रन प्रोग्राम में ले आ सकते हैं. ఇంకా ప్రతి ఆదివారం పిల్లలతో పాటు ప్యారలల్గా పెద్దవాళ్ళకు కూడా లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి. దానికి కూడా మీ అందరూ ఆహ్వానితులే. ओम शांति. आप फीडबैक अगर आपके हेड डिपार्टमेंट हेड को बताएंगे तो आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर लगभग 10,000 टीचर्स ने यहाँ से पूर्ण रूप से 7 days रेजिडेंशियल कोर्स के रूप में प्राप्त किया. एंडोमेंट डिपार्टमेंट से भी 4 days का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था. पुलिस डिपार्टमेंट के थे और आरटीसी थे तो 4 days का कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, यूनियन लीडर्स का भी प्रोग्राम हुआ है. तो आप सब अपना फीडबैक बता करके ज़रूर आगे शांति सरोवर से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की आशाओं का दीप जलाते हुए आगे जाएंगे. हम 2 मिनट परमात्मा की याद में आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे. 2 minutes मेडिटेशन. పాడతా తీయగా దాంట్లో లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి కాంటెస్ట్లో బ్రహ్మకుమారి विष्णुप्रिया बहन गीत गाएंगे. हम सब भगवान की याद में बैठेंगे. विष्णुप्रिया बहन.
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करावनहार तुम ही हो, तुम ही तो करते तुम ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों गोवर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हे प्रसन्न प्रभु के पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारी जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बुद्धि बल मुँह ज्ञान में नींदे, ये स्मृति तो जीवन में सागे। ये जगमंका में देले, ये कैला ये अहंकारमु। ఎంతో ప్రేమగని దరికి చేరే, జీవన నావను అర్పించి నీకై। బాబా చేయించేది నీవే, చేసేది మేము నిమిత్తమై। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे।
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।